थोड़ी देर में लेमन टी दे दीजिए. Good afternoon, all of you. And good afternoon, everybody online also. Let's get started then. Good afternoon, Mahendra. Good afternoon, Parmeet. Good afternoon, Divyanshi. थोड़ी देर में लेमन टी दे देना मुझे. Okay. When we go further, so yesterday we stopped, I think, talking on inequality and methods to achieve inclusive growth. So we'll work on that first. Now you write a statement there. Yeah, I know. So I'm taking you into that only. Okay. So you write inclusive growth represents growth with equity, Okay, so when I use the word equity, equity is different from equality. It's in the printed notes I have given you. I'm explaining it to you. ये development theory के साथ जो inclusive growth का notes है, वहाँ आपको ये सब कहानी मिल जाएगी. पर मैं आपको explain कर रहा हूँ. अगर आपको याद हो जब development theory हम पढ़ रहे थे, एक last topic था inclusive growth, वो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अभी. All right, but you will get it there. But you listen to this. So it means growth with equity. So when we use this word equity, equity implies that nobody envies the other. All right, that is a fair allocation. So we say nobody envies the other and I have a fair allocation. That is equity. Nobody envies the other. जो बंडल दूसरे के पास है वो बंडल मुझे नहीं चाहिए और जो बंडल मेरे पास है वो दूसरे को नहीं चाहिए. If I have a bundle, the other one doesn't want it, and if somebody else has a bundle, I don't want it. All right, that is the idea of equity as we bring forth. So in a bracket with equity, you write, it implies that no individual wants the bundle that the other individual has. No individual wants the bundle that the other individual has. That is equity. That no one wants the bundle that the other one has. All right. Put a comma then. So inclusive growth is growth with equity, comma, poverty alleviation, comma, capacity enhancement. So again the same thing, when we say capacity enhancement, that is that Amartya Sen's idea that give people capability to participate. Capacity enhancement means, you write in a bracket, removing capability deprivation, not only in terms of money, but in terms of knowledge, comma, gender, comma, caste, comma, race, etc., to remove any discrimination. Close the bracket. This was actually Professor Amartya Sen theory
of capability enhancement that make people knowledgeable, remove the stereotyping on the basis of caste or religion or creed, and make people better off in that sense. All right. In the same thing, you write and sustainable development again within a bracket you write when development policies of one generation do not affect that of next generation. Again, connected to the talk on environment that we did, that if you are growing sustainably, and also connected to the talk of fiscal sustainability, both of these things. So you need environmental sustainability and you need fiscal sustainability. One generation should not destroy natural resource, and one generation should not create fiscal burden. You understand that? On the next generation. So if that can be done, again it creates the possibility of enhancement. Okay. You write all these features. अब अगर GS में कभी तुमसे सवाल पूछें, ऑप्शन में कम चांसेस हैं, but in GS in one of the years they have asked what are the features of inclusive growth. ये जो चार बातें आपने लिखी, equity, poverty alleviation, sustainable development and capacity enhancement. These are the features of inclusive growth. So you write all these features together create inclusive growth. All these features together create inclusive growth. Change the paragraph and write policy measures required to create inclusive growth are policy measures required to create inclusive growth are, and we talk about it as 1, 2, 3 then. So you write 1, infrastructure development. Infrastructure development. And when we say infrastructure development, again, I was saying this yesterday, I'll repeat it again. I'll give you a 50, 60 words write-up also on this, maybe 80, that if infrastructure grows, if you develop road, you develop railways, you develop connectivity. If you develop connectivity, you allow people to stay in a comparatively less developed region, but work in a more developed region, and that means their income will rise, standard of living will rise, but cost of living will not rise as much. You understand that? That is the idea of infrastructure growth that you develop. Also, you create new opportunities for people. I can be living in a village, going to the city, earning money, coming back and spending my money in the village, creating multiplier effect in the village. You understand that? So this is what infrastructure support, connectivity can do. Similarly, if you electrify, if you give an electrification facility to people, then electrification will mean again that you can allow mechanization. More machines can come in, so more mechanization can take place. Electrification can also mean that you are talking about educational opportunities for people. Electrification will mean the working hours can increase, people can work before sunrise and work after sunset. So all these are processing of food and all can begin with electrification. So that will mean with electrification, again, you make sure that standard of living can be uplifted and more work opportunities can be created. And similarly, if you develop communication, so when you develop communication, you again make sure that you are making people reach a similar plane. For example, suppose before the mobile phone revolution and after the mobile phone revolution that you would see. So post mobile phone revolution in India, we see that even if I am a street vendor, my number can be taken by my client and I get a permanent clientele.
यू अंडरस्टैंड दैट कि मैं एक हॉकर हो सकता हूँ, मैं एक रैग पिकर हो सकता हूँ, मैं एक से स्क्रैप डीलर हो सकता हूँ, वेजिटेबल सेलर हो सकता हूँ। इन सभी, अगर मैंने किसी को अच्छी सर्विस दी, नाउ मेरे पास फ़ोन नंबर है, पीपल कैन कॉल मी एंड contact me, or it leads to development of, say, apps like an urban cab company and so on. So which means that I can be a plumber, I can be a carpenter, I can be a barber, and people can connect to me via this urban company and help me out. Thank you, Munna. Wahi rakh do. So this is the basic idea that we see across there. So you take it down, you write in that infrastructure growth. Infrastructure growth enhances capacity, enhances capacity, due to which due to which there can be better economic participation, better economic participation by people of vulnerable category, people of vulnerable category, full stop. For example, any growth in transportation, any growth in transportation like road or railways, like road or railways, which connects a lesser developed region, a lesser developed region to a more developed region, a more developed region creates opportunity, creates opportunity for people, full stop. If rural area is connected, if rural area is connected to urban area, then people can live, then people can live in the rural area and work in the urban area. People can live in the rural area and work in the urban area. Full stop. In the same thing you write, this will improve standard of living. This will improve standard of living, and rural money make it rural multiplier, and rural multiplier will be enhanced, rural multiplier will be enhanced through flow of money, through flow of money, which will raise demand, flow of money which will raise demand in rural area. Okay,
I hope you got the point there. Then you change the paragraph and write, similarly, electrification results in longer working hours, comma, more mechanization, comma, larger increase in business opportunities, comma, better education and healthcare, and higher productivity. Change the paragraph again. Communication development increases information set and speed of flow of information, which further leads to promoting opportunities for vulnerable section. Therefore, infrastructure development does not only contribute to efficiency growth of the economy, but also growth in equity and inclusion. You know, I've been expecting this question for some time in Indian economy paper, to be honest to you, in paper 2, that they should be asking you about, is inclusive growth antithetical to efficient growth? You know, that kind of a discussion. क्या इंक्लूजन करने पे हमें एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? तो यही मैं आपको राउंड ऑफ आंसर लिखवा रहा हूं, दैट इंक्लूसिव ग्रोथ does not necessarily mean speed of growth will be reduced. Rather, inclusive growth is stable growth. So you develop infrastructure, you will reduce your logistical cost. You develop infrastructure, you promote your mechanization. You develop infrastructure, you can promote efficiency with respect to communication. But that all will also enhance the capacity of people to participate. So you will be efficient and you will be inclusive. You understand that? So that is one factor there. Then you write 2. First was infrastructure, then 2. Development of civic amenities. Okay, I'm asked a question
from one of your friends that does sustainable fiscal policies includes removing old pension scheme, and what is the take on old pension scheme? Absolutely. Uh, I will be discussing the old pension scheme with you when I'm teaching you employment. Hopefully by the end of the class today, we will be entering that phase. So when you talk about this old pension scheme and new pension scheme, just keep it in mind. The biggest problem is old pension scheme was based on the theory that one generation will contribute to the pension of the other generation. And that is unviable, unsustainable. There is no reason why somebody will be promised a pension for life by the government. That also with dearness allowance and everything attached. No need. The longevity is rising in India. We can't afford it. I remember joking with my maternal grandfather that you served the country for 37 years and you take pension for 35 years. In fact, he finally took pension for 38 years, because he passed away at a very ripe age of something like 97. तो वो सर्व किए और पेंशन इतने दिन लिए, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी उस पेंशन की. He didn't need it at all. He retired rich. He was a good enough, well-to-do person. And he didn't need those pensions. Yes, what he could have needed was what anybody, aap kahenge, sir, but you need social security. Of course you do. So how do you get social security? From your income, you contribute a part into the fund. And when you retire, that part will be multiplied by the government because of their investment in stock market or bond market, etc. And then whatever money you can make out of that, you give it to the person as gratuity. Rather, if you ask me, I am a firm believer in that, and there are many like me, I'm not alone in that it should be a choice in the hand of the worker whether I want to contribute to my provident fund or not. I'm an adult. Why should government decide what should be saved for me? मैं X amount कमा रहा हूँ, उसका 12% सरकार को क्यों दूँ? मेरा मन करेगा मैं 12% नदी में बहा दूंगा, मेरा मन करेगा मैं 12% स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, मेरा मन करेगा मैं 12% का फिक्स डिपॉजिट रखूंगा. मेरा मन चलना चाहिए ना, मेरे पैसे हैं, मेरे कमाए हुए. सरकार क्यों बोलते हैं कि आप अपना पैसा बेसिक सैलरी का 12% प्रोविडेंट फंड में रखो और हम आपको अश्योर करते हैं कि आपको 8% रिटर्न मिलेगा. अगर तुम 30 साल अपना पैसा कहीं भी रखो तो 8% से ज्यादा रिटर्न ले लोगे. 8% is like a government bond return. Risk-free safest asset. Why should I do that at the age of 25, 28? Why should I play a risk-free asset game? And again, if somebody thinks, no, sir, I would be happy playing that game, do it. Keep an option. But keep an option that it is not mandatory. No, everybody should not be putting in there. And let this be a choice of the people. So we have not done that in our country. But old pension scheme was completely inordinate. It was out of place. It said that the old pension scheme used to say that you will get monthly pension throughout your life after retirement, at least equal to half of your retirement salary. And then there will be dearness allowance added. The revisions will happen after every pay commission report. So people would get a lot of money. As I said, मैं अपने maternal grandfather की बात कर रहा था. वो एक retired IAS officer थे. जब उनकी death हुई, उनकी pension 92,000 rupees थी. इतने तो सैलरी नहीं होती लोगों की, लेकिन वो बढ़ते 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 वो 92,000 पहुंचा हुआ था. और वो अच्छा खासा 6,000 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे. उसमें 2 मंजिल थे. नीचे वाले मंजिल पे स्कूल किराए पे लगा हुआ था. वो स्कूल से 1 लाख रुपए का किराया आता था. अमीर आदमी थे, जरूरत नहीं थी उस पेंशन की. और ठीक है, आप कहेंगे नहीं सर सब लोग अमीर नहीं होंगे. सही बात है, मैं अग्री करता हूं. लेकिन जो अमीर नहीं होंगे वो जिम्मेदार तो होंगे. तो जब रिटायर करेंगे उनको एक साथ आप दे दीजिए कि भाई ये रहा तुम्हारा 30 साल का जमा किया हुआ 1 करोड़ रुपया. अब तुम इस 1 करोड़ का जो मर्जी करो, इट्स योर चॉइस. कुछ लोग कहते हैं नहीं सर अगर उनसे खर्च हो गया तो 60 साल के आदमी की बात कर रहे हैं हम जो 35 साल सरकार को सर्व कर चुके हैं. थोड़ा उनके इंटेलिजेंस पे भरोसा होना चाहिए कि मूर्ख नहीं होंगे. The person has served the government for 35 years. But लोग भी क्यों बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम ले आओ, इजी वे आउट है. मेरे ऊपर कोई झंझट नहीं सेव करने का, मेरे ऊपर कोई झंझट नहीं मैनेज करने का अपने फंड को, सब कुछ सरकार मुझे देती रहे. अब इसकी दूसरी दिक्कत क्या है, इक्विटी के अगेंस्ट क्यों है ये? वाई इज इट अगेंस्ट इक्विटी? इट इज अगेंस्ट इक्विटी बिकॉज हार्डली 4% पीपल विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम and the money will be taken from the taxpayers' money because government will subsidize this or does subsidize this scheme.
So the taxpayers will take the burden of paying this subsidy. Why should taxpayer pay to the elite 4% government workforce people? What is the new pension scheme which I was suggesting to you? The new pension scheme is you contribute and your money will be invested in various places. That is also your choice, that whether you want to invest the money in equity or you want to invest the money in bond, you choose. Then you retire, 60% of your invested money, whatever it is amount, you will get it immediately. And the rest 40% will be kept by the government, and that will be a money you will receive as annuities every year. So you have a regular income, annuities, and you have your 60% immediately given to you. The 40% amount that is left over with the government, you can always write it in the name of someone, or after the age of 75, if you want to withdraw the entire money, you are allowed to do that. Now I have contributed to my pension, I will get my pension. Some people say no, but then how can a person decide at the time of retirement how much money to invest and so on? For that only there are financial advisors. Use their service, get things done. Again, I repeat, we are talking about government employees who have done permanent job for 35 years, 33 years in their life. There cannot be more privileges attached. And the expenditure it puts on the exchequer. कि जो खर्चा डालते हैं एक्सचेकर के ऊपर वो अलग से. ये अपने लोगों को अफीम खिलाने वाली बातें हो रही हैं अभी देश में, इससे सबको बच के रहना चाहिए. मैं तो आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ले आऊंगा, मैं रिजर्वेशन ले आऊंगा, मैं फ्री कर दूंगा सब कुछ. दिस इज डोप. One has to be very careful about that. It will hurt the nation big time in future. And it hurts the poor's more, because end of the day, poor's development scheme gets affected by that. So if you, since you asked for my view, I'm someone who completely believes it should be the new pension scheme that should go on, with a new choice added, that those who don't want to contribute to the government for their pension can choose a mutual fund or a private pension scheme to contribute their funds there also. अगर मैं एक वर्कर हूं और मुझे लगता है कि एक प्राइवेट फंड जो है, अच्छा एक बात और लोग कहते हैं सोशल सिक्योरिटी का सवाल है, तो फिर ऐसे पेंशन, परमानेंट पेंशन की प्रोविजन हर वर्कर के लिए कीजिए, सिर्फ सरकारी अफसर के लिए क्यों? तब तो सभी को सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है ना, सिर्फ सरकारी लोगों को थोड़ी सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है. अगर ओल्ड पेंशन स्कीम ही चलेगा तो ओल्ड पेंशन स्कीम सबके लिए आना चाहिए, वैसा पेंशन स्कीम कि आपको भी पेंशन मिलेगा, रिटायर करिए सबको पेंशन मिलेगा. जो 60 साल के ऊपर हो गए पेंशन लेना शुरू कर दें, सरकार उन्हें पेंशन देगी. ये अफोर्डेबल नहीं हो पाएगा और ये इक्विटेबल नहीं है. सो व्हेनेवर देयर इज अ टॉक ऑन ओल्ड पेंशन एंड न्यू पेंशन स्कीम, always take the view that new pension scheme is efficient and equitable. After a lot of political consensus, it was finally passed in 2004. No government touched it. These are cheap gimmicks. Election जीतने के gimmicks है और फिर भी नहीं जीत पा रहे. तो ये समझना चाहिए कि इससे लोग नहीं देंगे वोट, क्योंकि इतनी मिनिस्क्यूल कैसे इलेक्शन आप जीतेंगे? सरकारी अफसर हैं ही कितने? आप 2% लोगों को खुश करने की बात कर रहे हैं. 2% लोग वोट नहीं देंगे आपके लिए, और अगर दे भी देंगे तो आप जीतेंगे नहीं. तो इसीलिए जरूरी है कि आप वो बात करिए जो 25% के लिए, 30% के लिए फायदेमंद हो. वो बात, इसीलिए हमेशा ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में कीप योर स्टैंड क्लियर ऑन दैट. एनीवेज, you go further. In civic amenities you write, it includes drainage facility, housing facility, sanitation facility, etc. It includes water supply also, and so on. All those civic amenities is what it includes. Okay, so you write in that, etc., which can reduce cost of living, and therefore improve standard of living for the poor. Again, remember, connected to both efficiency and equity. When you make a house,
you don't only give a person shelter, you give a person protection, which adds to efficiency at work. When you create drainage facility, sanitation facility, you don't only make sure that people get hygiene, you make sure they don't fall unwell, and that makes sure that their labor force participation will be high. So efficiency and equity will always be connected to each other. Also, I'm teaching you one thing here. In case you are writing this as an answer in the exam, mix what I taught you yesterday with what I'm teaching you today. As in, if you are writing on infrastructure development, talk about some of the government programs like say a Sehaj Bijli Har Ghar Yojana or say a Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Or if you are writing at civic communities as a program, then talk about Pradhan Mantri Awas Yojana, ग्रामीण एंड शहरी, और टॉक अबाउट से स्वच्छ भारत योजना. तो वो क्या करेगा कि आप एग्जाम्पल्स देंगे अपने आंसर में, एग्जामिनर को कोलैबोरेट करते हुए दैट ओके आई एम गेटिंग व्हाट आई एम राइटिंग, दैट दिस इज द वे इक्विटी कैन बी डेवलप्ड. सो ऑलवेज प्लान योर आंसर्स इन दैट मैनर. ओके, देन यू राइट यस यस. हाँ, डाल सकते हो. एग्जिस्टिंग रेलवेज को एक्सपैंड करना, नए रेलवे लाइन सेटअप करना, ये चीज़ें हैं जो तुम लिख सकते हो, जो अगेन कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं. ऑलराइट, ओके, यू राइट द थर्ड वन. देन यू राइट फाइनेंशियल इंक्लूजन. Again, I'm not making you write anything because yesterday I made you write everything on financial inclusion, including the examples of government programs. So what does financial inclusion do? Think. Banking inclusion means, again मैं बस repeat कर रहा हूँ जो मैंने कल कहा था. Banking inclusion means a financial identity which will allow me to get transfers, get loans, and that will allow easier transaction possibilities for me and for the country, mobilization of resource. Credit inclusion, which will allow me to take small risks, allow new entrepreneurship development, it will allow competition in the market. Insurance inclusion gives me protection. As a farmer, I can experiment with new crops. As an entrepreneur, I can experiment with new methods of production. You understand that? So that is financial inclusion as it goes. Also, say pension inclusion allows me to have a secured life after my retirement, which will allow me to put more efforts in my work. You go through that transition, believe me. आपके initial working phase में क्या होता है? You are working to secure yourself. If a country has a well-developed financial sector, that is very important. Again, left-wing economists don't understand it because they don't understand capitalism. जैसे right-wing economists या capitalist economists को socialism समझ नहीं आता. हम लोग इंडिया में बहुत लकी हैं, हम दोनों पढ़ लेते हैं या पढ़ सकते हैं कम से कम. Financial capital का use क्या है? That if you are creating financial capital for people, you are giving them an extra source of income in old age. And you are letting this financial capital, like suppose I do a pension fund and I put my money in pension fund, then I am secured in my old age and my continuous savings became a source of investment for many, which resulted in development of the economy also. So it's a win-win for everyone. You understand that? That is why financial capital is very important. Bond market is very important. You know, share markets are very important. Share markets can be that democratic method of raising money. I am a good business person. I believe in my business. I am doing well in my performance. I will open up myself to share market participation. So if by chance there is a government bank or any other bank which is nepotistic and is not giving me money because I am a small business person, I can approach the market, raise my money from there. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर सिर्फ रिमाइंडर दे रहा हूँ. Development of democracy, rationality, and capitalist markets followed by financial markets all happened one after another and together. They didn't happen separately. तभी मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप MTNL नहीं खरीद रहे तो आपने MTNL को वोट आउट किया मार्केट से. आप वोटर हैं जब आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं. आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं मार्केट में वोटेड इन हूं. आप कहेंगे नहीं नहीं सुनना विभास सर को, मैं वोट आउट हो गया. माई मार्केट डिसाइड्स नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू. तो मार्केट एक डेमोक्रेसी की तरह फंक्शन करता है जिसको आप नहीं बोल सकते. हाँ, अब उस डेमोक्रेसी की तरह ही उसको प्रोटेक्शन चाहिए. मैनिपुलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ कंपटीशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इनसे बचने की फिर जरूरत है. आप डेमोक्रेसी को भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करते हैं ना कि भाई कोई मेयर का इलेक्शन हथिया ना ले.
तो उसके लिए एक कोर्ट रखते हैं, दैट द कोर्ट विल डिसाइड कि मेयर के इलेक्शन में गड़बड़ ना हो। तो आपको वैसे ही कोर्ट रखना पड़ेगा, रेगुलेटरी बॉडी रखनी पड़ती है मार्केट के लिए भी, कि कोई मार्केट ना हथिया ले, मोनोपोली ना कर लें अपनी। You understand that? So, but then they are all institutions in the same domain. Understand it like that. एक ही plane पे बने हुए institutions हैं ये, एक साथ ही evolve हुए। You know, so that is why deeper market penetration. So financial markets can do that. More people participating and all, and that is the role of pension funds in people's life and for economic benefit. So again I repeat, financial inclusion, अब जैसे banking inclusion है, एक तरफ equity देता है, एवरीबडी कैन गेट एक्सेस टू बैंक, दूसरी तरफ एफिशिएंसी देता है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ाएगा। क्रेडिट इंक्लूजन है, एक तरफ इक्विटी देता है, छोटे पर्सन, लोअर एंड के पर्सन को भी लोन मिलेगा, वो अपनी कंपनी चलाएंगे, वो अपने प्रोग्रेस करेंगे, दूसरी तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाता है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ाता है, तो एफिशिएंसी बढ़ाता है। ऐसे ही इंश्योरेंस इंक्लूजन है, एक तरफ एक फसल बीमा योजना किसान को प्रोटेक्ट करती है, दैट ओके यू हैव अ फसल बीमा योजना एंड यू आर प्रोटेक्टेड, बट दूसरे तरफ उनको फिर ताकत देते हैं दैट द फार्मर कैन गो एंड प्रोड्यूस अ हाई वैल्यू क्रॉप विच विल कंट्रीब्यूट हायर टू जीडीपी ग्रोथ। सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट दैट इक्विटी एंड एफिशिएंसी आर नॉट एंटाइथेटिकल टू ईच अदर, प्रोवाइडेड वी गो फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। We should not go for growth and then believe it will become inclusive. We should target inclusion and go for growth, and growth will be happening and inclusion will also happen. हाँ, कुछ लोग नाराज होंगे, कौन नाराज होंगे? जिनका स्टेटस को छीनेगा, क्योंकि जब नीचे के लोग ऊपर आना शुरू होंगे तो जो ऊपर के लोग हैं वो ऊपर जाएंगे, पर उनमें से वही लोग ऊपर जा पाएंगे जो इक्वली हार्ड वर्क करने में बिलीव करते रहे हो। जो लेजी होंगे वो नीचे आने लगेंगे, वो रेजिस्ट करेंगे। They will say, oh look, these people who were lesser than me earlier are now catching up with me and I am losing up on things. This is the challenge that you would have when it comes to that inclusive growth challenge that one would have. So what elements will you call them according to Levenstein? What did he call it? Progressive और regressive को Levenstein क्या बोलते थे? एक शॉक होता था उसमें, एक होते थे जो बोलते थे कि मैं इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करूंगा, और एक शॉक वेरिएबल्स होते थे। तो ये शॉक वेरिएबल्स क्या थे? रिग्रेसिव्स कौन है? जो चाहते हैं वही राह चलता रहे जो चल रहा है, कुछ बदलाव ना आ पाए। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट नाम की एक थ्योरी पढ़ते थे आप बहुत साल पहले, पिछले महीने की बात है, उसमें ये बातें पढ़ते थे आप। स्टिमुलेंट्स एंड शॉक, स्टिमुलेंट्स विल बी द प्रोग्रेसिव्स एंड शॉक्स विल बी द रिग्रेसिव्स. So when those people who would not like these changes to happen are those who are willing to have a shock, regressives, who would not like the change to happen because they will believe their position in the society will be compromised. So they don't want it to happen. And of course they won't accept that this is the reason. They will give you different reasons for not letting it happen. तभी मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ज़्यादा डेटा, ज़्यादा जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोग बिना डेटा के आर्ग्यूमेंट को फैसाइल बनाते हैं उनको आप डेटा से कम कैप्चर कर सकते हैं। दैट इज द एस्पेक्ट। ओके, देन यू राइट द नेक्स्ट थिंग हियर। So financial inclusion, I'm not making you write anything because it's something that we did yesterday. You write fourth, inclusive education. Inclusive education. And put a dash and write, education creates inclusion. Education creates inclusion in following ways. Okay, I'll just answer one thing. Karan, you didn't understand the whole thing that I talked. Upfront payment at retirement is made from the same money which you have deposited with the government. So why should government have a problem returning your money? Why should it be a fiscal obligation? It should already be planned.
You know that upfront payment of retirement money should be done as I have deposited my money with you. The way insurance companies give, the way pension funds give, the government can also do the same. So there is no burden on the fiscal policy if you go for upfront payment at the time of retirement on the basis of money that has been deposited already. Sambhavi, we will discuss that. That point we will come to. All right. Okay, Devashish, you are right. Wait, let's see this now. You write first point in this education as you write education provides higher level of information which improves the choices made by individual. I'll tell you what I mean by that. As I get more educated, I have better chances of making choices where I'm informed about what I am doing. Okay, I'll make it simple for you. 2 लाख रुपया लेकर एक 10,000 रुपया कमाने वाले आदमी अगर कोई there's a person who earns 10,000 rupees and takes 2 lakh rupees loan to celebrate a function for his child. Rational or irrational? Because of your education, you say that. My point is just that. Allowed you to think better because you are educated. And you said irrational. But when we are less educated, we do it on a daily basis as seen in our rural areas. That people will take big loans कि बच्चे का मुंडन कराना है. इसमें अपना मुंडन हो गया समझ नहीं आ रहा है. You know? लेकिन बच्चे का मुंडन कराना है. गांव में लोग क्या बोलेंगे ये बहुत नॉर्मल है. और अभी हम और आप इस बात पे हंस सकते हैं. लेकिन दिक्कत है कि ये तो एजुकेशन जब होगा, जब हम जानते होंगे रिस्क क्या है, प्रॉब्लम्स क्या होंगी, तो ही हमें पता चलेगा. You understand that? So this is the challenge of not being educated. Challenge 1. 2, you write, so that is how it creates better off, makes people better off. Second, you write, education improves skill. Education improves skill and therefore contributes to better employment opportunities. Education improves skill and therefore contributes to better employment opportunities. So that's another thing that education does, makes people skilled so they can work on higher plane. Again, think those who are better educated will get better quality jobs. Those who will be uneducated will get poor quality jobs, and that makes a difference in their living standard then overall. Please connect it to what I was telling you yesterday, that we should have an India where we are not talking about people becoming drivers or maids or helpers, because that shows they are not well educated and they're doing with the low income group. Careless and useless employment. So if we upgrade people, educate them, there will be no one required to do this careless, useless employment, and that will mean that people are living a better standard of life. All right, that is the aspect here. Then you write next, third point, better education improves capacity to adapt with change in technology, which provides more stability of income.
Because remember again, your skills are already there. You just have to adapt with the changing time. Easier. But if the skills are absent, adapting becomes more difficult. So, in fact, again, I keep saying that, but it was quite surprising for me because people her age would not do that. My mother, till she was no more, would be a very active participant on social media. Very active participant, but she adapted because her generation had never seen social media. And it was not only Facebook, she would be on Twitter, then X now. And she would keep commenting on events. She would keep liking, disliking things. In fact, her Instagram account was built for earlier than mine. Because my Instagram account is hardly active. मैं उस पर एक्टिव उतना नहीं रहता हूँ, पर उनके Instagram account पहले बन गया और वो सब एक्टिव रहते थे. But the way I saw her adapting, she adapted mobile banking much faster than what others would. तो अपने आधे काम घर से ही अपने मोबाइल बैंक पे कर लेते थे और हमें बोलते भी थे कि देखो ये सब तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, सारा कुछ हो गया. अब बताते भी थे ऐसे सीखा जाता है, ऐसे किया जाता है. So what that taught me was that it was just that she was educated. And she took interest, so she could adapt very quickly to the new changes. She didn't have to go many places. In fact, once she surprised my village तहसीलदार, क्योंकि तहसीलदार जी को नहीं पता था कि विलेज के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो सरकार ने अपलोड कर दिया है ग्राउंड पे. तो वो मॉम को कुछ बता रहे थे कि आपका यहाँ ज़मीन है, नहीं है. तो मॉम ने उसके वो फोटोग्राफ्स खींच के तहसीलदार जो ऑफिस थे उनका डाउनलोड करके फोटोग्राफ्स खींच के सैटेलाइट इमेजरी और उनको भेज दिया. बोले देखिए यहाँ मेरे ज़मीन है, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए. सो ही कॉल्ड माई ब्रदर अप कि आपकी मम्मी तो बहुत एडवांस्ड हो गई हैं उनको तो सब कुछ आता है एंड सो ऑन. तो ये आप तब कर पाते हैं जब आप थोड़े एजुकेटेड हैं, तो आपको मदद मिल जाती है एंड यू आर एक्टिव, यू डू थिंग्स. बट शी यूज्ड टू सरप्राइज मी बिकॉज मेनी टाइम्स आई वुड सी पीपल हर एज refraining from using technology, but she would always be up to it, that okay, I would use this technology and I'll do things and so on. So this is something where when you see even an old age person doing it, my purpose of giving you the example was that, but that is the force of education. That if people are well educated, people have understood things, they adapt very quickly. In this world of fourth industrial revolution, you need to make sure you change yourself quickly so that you can adapt to the changing technology. Now, I'll tell you one thing there, which we need to know. और एक क्वेश्चन था आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ आई थिंक शुभ पूछ रहे थे दैट लीडरशिप और एक और कोई टर्म था कि हाँ टीम वर्क से फोर्थ IR में कैसे, तुम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या करोगे. सोचो तुम एक नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो तो तुम्हें टीम वर्क चाहिए. यू नीड टू कोऑर्डिनेट. आपको आना पड़ेगा कि टीम वर्क कैसे करते हैं. सो यू विल बी वन पार्ट ऑफ द टीम, somebody will be the other part. So somebody can be your technician, somebody is your content developer, somebody is your programmer, and you are one of the participants in it. So you need to know how to work in the team, how to coordinate the team, be a good team worker in order to make sure that the whole team doesn't collapse. आप कहेंगे सर ये तो पहले भी होता था. नहीं होता था. पहले आप आइसोलेशन में बहुत सारे काम करते थे, तो एंटाउरेज नहीं था आपके साथ. जैसे मैं मान लीजिए एक प्रोफेशनल हूँ, फिल्म एक्टर हूँ, तो फिल्म एक्टर्स के पहले बहुत से बहुत एक सेक्रेटरी होते थे, दैट्स इट. अभी उनके फाइनेंसर भी होते हैं, उनके प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके शेड्यूल लिस्टर्स होते हैं, उनके फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं. तो ये पूरी एक टीम बना ली उन्होंने अब एक मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि ये सारा कुछ एक जगह बैठ के किया जा सकता है एंड पीपल कैन रिमेन कनेक्टेड एट वेरियस प्लेसेस. This is the idea of teamwork. Leadership important because in the fourth industrial revolution, with machine learning, with Internet of Things, you will need to make sure how you coordinate everyone in your team at different places. So you need to have the leadership skill. You will keep finding new challenges. आपके नए challenges आएंगे सामने हमेशा. तो नए challenges को कैसे tackle करते हैं आप? By putting your hands up and saying, I'll tackle this. That is leadership quality. या फिर आप दूसरे जो क्वालिटी होती है वो होती है जिनमें लीडरशिप नहीं होती, वो कहते हैं कोई और कर दे, मैं नहीं करूंगा. हु टेक्स द रिस्क? सो लीडरशिप कैपेबिलिटी इज रिस्क टेकिंग ability to coordinate my team men or team women for that matter, ability to make sure that I can understand what my business requires. That is leadership quality. So remember, fourth industrial revolution will make sure that you have an intelligent machine doing all the manual work for you. So you will need an intelligent human who will do the non-manual work. And these things qualify as non-manual work. Educational training should be about that. मैं क्यों नहीं वाला सवाल पूछना सिखाना चाहिए स्कूल स्टूडेंट्स को, मैं ही क्यों की जगह.
ये ज़रूरी है। आप देखेंगे, आप काफ़ी लोग, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं लकी हूँ, मैं इकोनॉमिक्स वालों को पढ़ाता हूँ ऑप्शनल में, या इंजीनियर्स को पढ़ाता हूँ, या गुड स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मुझे एक फ़ायदा मिलता है। आप देखेंगे, आप स्कूल में आप में से मैक्सिमम लोग वो कैटेगरी रहते होंगे जो कहते होंगे हाँ मैं करता हूँ ये, लेट मी टेक इट अप। उसी को लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। हु विल रिमाइंड मी टुमारो दैट दिस हैज़ टू बी डन, सर आई विल डू इट। दैट्स लीडरशिप क्वालिटी। कुछ लोग जो जिनमें नहीं है वो क्वालिटी, वो कहते हैं अरे बेकार, टीचर को बोलता रहता है मैं करूंगा। टीचर को नहीं बोल रहे मैं करूंगा, उनकी ये एबिलिटी है, उनको खुद पे भरोसा है कि मैं कर लूंगा, ये मुझसे हो जाएगा। तो ही तो आपके सामने कोई प्रोजेक्ट आएगा। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या चीजें होंगी, आपके आगे एक प्रोजेक्ट आएगा। सपोज कीजिए एक डिजाइनिंग करनी है आपको किसी मशीन की, जो आपको डिजाइन करके, इंडस्ट्रियल डिजाइन करके कंप्लीट करना है। तो जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होंगी वही तो बोलेंगे ठीक है मैं डिजाइन करता हूं, आप लोग देख लीजिए और फिर हम लोग मिलकर इसको करेक्ट कर लेंगे। पुटिंग द हैंड्स अप इज लीडरशिप क्वालिटी। सो हु पुट्स द हैंड्स अप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट बहुत बार हम हैंड अप नहीं करते क्योंकि हम हेजिटेंट होते हैं। हम हेजिटेंट होते हैं तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। कभी कभी हम स्केर्ड होते हैं, व्हाट इफ आई डू इट इफ इट गोज रॉन्ग। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड लीडर्स एंड नॉट सो गुड लीडर्स। Good leaders are always optimistic people. Nothing will go wrong. We'll get it done. Let me see if this can be done. अच्छा चलो मैं गाइड कर देता हूँ. This is their approach. Bad leaders are people who believe something will go wrong. Something has to happen. It will come back on me. मैं ही फंसूंगा, मुझ पे ही बात आएगी. तो ये बात बस देखने की है. आप कभी एक सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है, उसको पढ़िएगा. It is a very good autobiography from leadership skill point of view. For all the limited ability he had in cricket, because he was not as talented as a Tendulkar or a Dravid, but his leadership abilities were tremendous. So that book actually was a lot of insight. जब इंडियन टीम में बात हुई ओपन कौन करेंगे तेंदुलकर के साथ, तो कुछ लोग चुप थे, उनको लग रहा था ओपन करेंगे तेंदुलकर के साथ, ये तो खुद ही इतने मास्टर है. So then Saurav Ganguly said, I'll do this opening. I'll open with him. And he retired as the second highest scorer after Tendulkar in one day cricket. तो वो हैंड्स पुट करने की, आप सोचिए जिस समय वो कैप्टन बनाए गए थे, मैं जानबूझ के उनका एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने को लीडरशिप है क्या. जिस समय वो कैप्टन बनाए गए थे 2000 में, तेंदुलकर ने रिजाइन कर दिया था, एंड वी वर अंडर ऑल दैट मैच फिक्सिंग स्कैंडल. हैंसी क्रॉनिये, अजहरुद्दीन, तेंदुलकर रिजाइनिंग, इंडिया हैड लॉस्ट द सीरीज टू साउथ अफ्रीका 2-0, and he was made the captain in that circumstance. He was not made the captain. He said, I'll be the one. You choose me. I want to be one. If you choose me, that is. So people said, okay, nobody wanted to be the captain of Indian team at that time. So he said, let me be one. मैं बन के देखता हूँ. तो ये आपको समझा रहा हूँ that वो लीडरशिप क्वालिटी होती है कि कुछ लोगों को पता है और वो सब चीज़ें करेंगे. ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी इंडिया, उनको पता था कि ये वर्ल्ड चैंपियन है, 16 टेस्ट मैच लगातार जीत के आ रहे हैं, तो इनको चिढ़ाएं कैसे इनके स्किन, और ये लोग स्लेजिंग करते हैं तो इनके स्किन में कैसे घुसें ताकि मेरी टीम को भी हिम्मत मिल जाए कि इनको स्लेज किया जा सकता है उल्टा. तो क्या करते थे, जानबूझ के स्टीव वॉग को टॉस पे वेट करवाते थे. He would deliberately do that, knowing that this fellow will get annoyed. तो 3 मिनट 4 मिनट लेट से, और जाके सॉरी भी बोलते थे. ओ सॉरी आई गॉट डिलेड, मैं थोड़ा ब्लेजर नहीं मिल रहा था, कभी बोलते थे मेरा कॉइन नहीं मिल रहा था, कुछ भी बोलकर उनको सॉरी बोलते थे. बट एवरी टॉस द फेलो got delayed and would deliberately, he said that I knew I'm getting into his skin. So I would do it to tell my teammates, look, only these guys can't sledge, we can give it back to them. So this is leadership. एडिलेड की टफ पिच थी, 84 for 2 थे, थर्ड प्लेयर उनको जाना था, द्रविड़ को इन्होंने बोला नहीं मैं जाता हूँ, 134 रन मार दिए जाकर. ये लीडरशिप है. जो धोनी ने वर्ल्ड कप फाइनल में किया वो लीडरशिप था. तो आप समझिए, मैं स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि कॉमन है, सबको पता रहने चाहिए. नहीं तो आप आर्मी से या कॉर्पोरेट सेक्टर से, कॉर्पोरेट लीडरशिप स्किल्स आर अगेन ट्रिमेंडस. द पीपल हु डिड, लिया कोक्का थे एक, पता नहीं आप नाम सुने होंगे या नहीं. लिया कोक्का वॉज एन एमडी ऑफ फोर्ड, और हेनरी फोर्ड 3 जो थे, ओरिजिनल हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन, उनको ली याकोका से थोड़ा इनसिक्योरिटी हो गई, बिकॉज याकोका वाज लुक्ड अप टू बाय एवरीवन. ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड ही वाज द सीईओ ऑफ फोर्ड. ही वेंट अप द लैडर, वो इंटर्नशिप से शुरू किया था उन्होंने और सीईओ बन गए थे. तो कंपनी में जबरदस्त इज्जत थी उनकी. पीपल रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट दैट ही इज फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. सो हेनरी फोर्ड गॉट अर्ग्ड बाय दैट, ही फेल्ट इनसिक्योर, सो ही थ्रू हिम आउट. उन्होंने इनको निकाल दिया याकोका को. So what Iacocca does is he goes and joins Chrysler,
क्राइसलर वॉज अ कॉम्पिटिटर टू फोर्ड इन दोज डेज, और इमीडिएटली क्राइसलर ज्वाइन नहीं किया उन्होंने कहा कि मुझे पहले सीईओ बनाकर एक थर्ड रेट कंपनी ने बुलाया तो मैंने ज्वाइन कर लिया कि कोई नौकरी तो चाहिए। बोले मैं पहले दिन गया वहाँ बैठा एंड आई रियलाइज दिस इज नॉट द प्लेस आई बिलोंग टू, सो आई सेड आई विल नॉट डू दिस जॉब। And then he applied at Chrysler. Chrysler was looking for a CEO, and Chrysler was facing bankruptcy at that time. So nobody wanted to be a CEO of Chrysler. So he chose to be the CEO of Chrysler. And first thing he began with was he said, my salary will be $1 per annum till Chrysler doesn't come back into profit. And that is leadership skill. ये नहीं कि मैं बन गया CEO, अब मुझे मेरा पैसा दे दो, कंपनी डूब जाएगी तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। बोले मुझे $1 पर एनम दो जब तक मैं इसको प्रॉफिट में नहीं ला देता हूँ। एंड यू नो क्वाइट पैराडॉक्सिकली 1981 ही जॉइंस क्राइसलर एंड 1984 क्राइसलर वाज रिप्लेसिंग फोर्ड एज द नंबर 2 कार मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएसए। General Motors were always number 1, but these guys would fight for 2 and 3. And Chrysler would replace Ford within 3 years of Iacocca joining Chrysler. That's leadership skill. He would sit with his workers on the floor shop. उनके साथ बैठ के टायर कैसे फिट करना है सिखाते थे उनको कि टायर ऐसे फिट होता है ऐसे नहीं। तो उन्होंने क्राइसलर के 3-4 जो दिक्कतें थी वो फाइंड आउट की और बोले ये ठीक कर लो, गाड़ी अच्छी बनने लगेगी। एंड दे स्टार्टेड सेलिंग मोर। सो दिस इज लीडरशिप स्किल। और फॉर दैट मैटर सैम मैनिकशॉ, you know, he would go and sit with his troops on the field. He would not sit in his office. So ये leadership skill है। तो न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आपको ज़्यादा leadership skill चाहिए क्योंकि मशीन के साथ आपको leadership रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए 4th IR में leadership skill and teamwork are very important to face the challenge that the IR will create for you. And that is what you get by educating correctly. That was my limited point. That if you educate people correctly, ये किसी में inborn नहीं होता, ये बस surroundings का असर होता है। You know, हमारे surrounding ने हमें कितना डराया या हमारे surrounding ने हमें कितना बढ़ावा दे दिया। तो surrounding ने अगर डरा दिया, गलती मत कर देना, तोड़ मत देना, अरे तुम पक्का तोड़ दोगे, अरे तुम ही से गिरेगा ये, तो फिर हम थोड़े डरे हुए बड़े होते हैं, मुझसे टूट जाएगा, मुझसे गिर जाएगा, मैं तो थोड़ा कमज़ोर हूँ। और surrounding ने अगर बोल दिया, अरे ये तो बड़े लायक हैं, इनसे कुछ नहीं टूटता, ये तो सब कुछ सही कर लेते हैं, तो उनको लगता है सब मैं ही तो हूँ जो सब सही करता हूँ। सो इट्स जस्ट दैट द सराउंडिंग। आप सोचिए आप इतने पहलवान क्यों हैं आज? आप बचपन से सुनते आए ना, तुम मेरे तेज वाले बच्चे हो, तो आप थे थोड़े ही, बोल बोल के बना दिया आपको। तो अब आज आप बन गए। टुडे यू बिलीव दैट आई एम दैट स्मार्ट किड बिकॉज राइट फ्रॉम बिगिनिंग यू वर टोल्ड यू आर माई स्मार्ट किड। तुम तो बाकी भाई बहनों से ज्यादा तेज हो, तुम्हें तो ज्यादा अकल है, तो हमें बिलीव होने लगता है अरे हाँ। एंड दैट बिलीफ इज द की, दैट इज एजुकेशन। आई होप यू गेट दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। यू नो, तो एजुकेशन मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई किताब विताब नहीं, साथ में ये है कि हम सुनते क्या हैं अपने बारे में क्या सीखते हैं। यू नो, दैट एक्चुअली लीड्स टू दैट। ओके, देन यू राइट द नेक्स्ट थिंग अप इन दैट, you change the paragraph and write educational, no, this change the paragraph. Now we are writing something else on education. You write educational training can be made inclusive by, and you can take it as ABC. So you write A, better infrastructure in school, so that's inclusive education. All right, that if government schools or public schools can have better infrastructure supporting their children. I'll give you some numbers there. I'm quoting to you annual status of education report this year. There are still 6% schools in India which do not have a permanent roof. That is something we got to work upon. You know, अगर permanent roof नहीं है आपके स्कूल में तो परेशानी है वो। There are still 3.5% schools in rural India which do not have separate toilet for girls. Again, that means girl child doesn't go to school because of the inhibition of not having a separate toilet. There are still 11% schools in India where multiple classes are conducted in the same room. You know, 11% schools. Now, what does that mean? यहाँ पे 10th standard चल रहा है, इधर 9th standard चल रहा है,
वहाँ पे 8th स्टैंडर्ड चल रहा है, उधर 7th स्टैंडर्ड चल रहा है, एक ही रूम में 4 क्लासेस चल रही हैं। अब 7th वाला उठा, खुद को प्रमोट करके 10th वाले में बैठ गया। कोई रोकने वाला है नहीं वहाँ ज़्यादा। सो दिस इज नॉन कंड्यूसिव एजुकेशन, दैट सेम रूम, चारों तरफ से नॉइज आ रहा है, सब अपना उसी में पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज अगेन नॉट समथिंग विच इज गुड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। देन यू राइट सेकेंड, the okay, that's annual status of education report. Yeah, it's published by an NGO called Pratham. All right, ASER, annual status of education report. Okay, second, okay, you were saying source. I was listening shoals. Source of the shoals क्यों पूछ रहे हो? Okay, let's see this. Second, you write better accessibility to education, okay, please connect it, better accessibility to education. Please connect it with the example I had given you earlier about that poor child going to school belonging to a family where no one was educated, the ABC thing that I had written. That is accessibility to education. Accessibility का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि स्कूल की बिल्डिंग और टीचर्स हों। Accessibility का मतलब होता है पढ़ाई समझ में आए। I should understand what I am studying and I should be supported on my study. That is accessibility. Somebody should be pushing me to school. That is accessibility. That care should be taken. Midday meal scheme is becoming that care with respect to attraction to the school. That is happening, no doubt. In fact, we were on a research trip and I was in one of the backward districts of India. और वहाँ एक स्कूल में था मैं, तो वहाँ एक बच्चा लेट आया स्कूल और स्कूल गेट बंद हो गया तो वो रोना शुरू हो गया। तो बोले रो क्यों रहे हैं, ये बच्चा स्कूल बंद हो गया, चले जाएं अपने घर वापस। तो बोले नहीं, इनके मदर फादर दोनों डेली वेज लेबरर हैं, सो दे गो टू वर्क एंड दिस फेलो गेट्स हिज मिड डे मील इन द स्कूल. So now he knows that if he doesn't get allowed into the school, he will not get the midday meal. So the fellow was crying because of that. Then they, of course, thankfully took him in and brought him in. But that's a big attraction at least to the school. कि स्कूल नहीं जाने की कम से कम इच्छा नहीं होगी. वहाँ पे रोकना क्या है? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन से, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी से, कि बच्चे सिर्फ मिड डे मील में स्कूल ना आए. कुछ जगह वो हो रहा है कि मिड डे मील में ही आते हैं, खा पी के चले जाते हैं. तो ये एक गड़बड़ बात है, that it should not be only midday meal. Midday meal should be an attraction to the school. All right, that is the aspect. And then you write third, better coordination between university education and employment generation. Better coordination between university education and employment generation. That's again very important. What the industry wants is what the university should be aligned with. When I say industry, I don't only mean factories. I mean R&D also. क्योंकि अगेन आपको अगर कोई लेफ्ट लीनिंग पर्सन मिलेंगे तो वो कहेंगे यूनिवर्सिटी इज नॉट द प्लेस टू क्रिएट इंडस्ट्रियल लेबर. परफेक्ट. व्हाट इज यूनिवर्सिटी अ प्लेस फॉर? टू क्रिएट थिंकर्स, राइट? हाउ डू यू क्रिएट थिंकर्स? नॉट बाय गिविंग देम प्रेडिक्टेबल 5 क्वेश्चंस or maybe 10. You create thinkers by making them study all through the semester or all through the year, pushing them to think before coming to the classroom and pushing them to think after going away from the classroom. That is very important. तो यूनिवर्सिटी ये बन जाए, अगर थिंकिंग स्पेस बन जाएंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने आप होगा, अपने आप ही आप काबिल लोग निकालेंगे बाहर. बट अगर आप थिंकिंग प्लेस नहीं बनेंगे और सब लोग आकर बस अपनी बात कह के जा रहे हैं और डिस्कशन की स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है, देन द कंट्री डज कम डाउन. रिमेंबर, एजुकेशन इज व्हाट becomes the basic feature which uplifts a country or which downgrades it. अमेरिका इतने सुपीरियर क्यों हो जाते हैं? Why are they the global leaders? Because ब्रिटेन को उन्होंने हराया यूनिवर्सिटी सिस्टम में पहले और फिर इकोनॉमी में हराए. They first created a Yale, a Massachusetts, and so on, the other universities, to compete and outcompete Oxford and Cambridge.
And that resulted in America becoming the powerhouse that they became. So your universities are the real powerhouse. Capability to think कितनी दे पा रहे हैं अपने लोगों को, क्योंकि कैपेबिलिटी बनती है सोचने की. तो बहुत लोग केपेबल ही नहीं हो पाते कि कोई थॉट उनके दिमाग में आए टू असर्ट देमसेल्व्स. तो वो कैपेबिलिटी अगर हम दे दें तो आप नौकरी के लायक अपने आप बन जाएंगे. Nobody says that you have to be a blue-collared factory worker. But again, to be a good manager, to be a good team leader, to be a good CEO, you need to be an educated enough person. So universities can play that role. Also remember, in Indian context, diversified courses in the university. That's very important. We have some very fixed courses and very retrograde in nature. आप सोचिए, हर आदमी इकोनॉमिक्स के साथ ज़रूरी नहीं कि मैथमेटिकल रिसर्च ही करना चाहे. तो आप उनको बेसिक मैथ्स का ज्ञान दे दीजिए, जो हम पहले एक आधा साल में दे सकते हैं. उसके बाद उनको ऑप्शन दीजिए, जिसको हम कहते हैं interdisciplinary learning. Somebody can feel that I want to connect the sociology of a place to economics of a place to the anthropology of the place. Let them do that research. Somebody might want to research on the political economy. Somebody might want to research on international relations, impact on economy and history. तो ये अगर हम एक ओपन स्पेस बनाएं जहां आप जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं और आपका करिकुलम डिजाइन होगा, बस वो ज़्यादा एक गुड माइंड को अट्रैक्ट करता है, एंथ्यूज करता है, एज कंपेयर टू जब आप एक रेजिमेंटेड करिकुलम देते हैं. वो बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस है. रेजिमेंटेड करिकुलम मीन्स आई एम टेलिंग यू, यू स्टडी दिस एंड दिस शुड बी योर वे ऑफ ग्रोथ. So fair enough, I can understand somebody being taught in the first year graduation or second year graduation with all the basics in a regimented system. But there also allow them to refer various books. I can give you the option of 5-6 books. Those who have the capacity can read all 5-6. और आप में से बहुत लोगों में वो कैपेसिटी है, शायद आपने एक्सप्लोर नहीं किया. मैंने अपने समय में किया था. मैं टीचर्स रीडिंग भी पढ़ता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ देते हैं, पढ़ लेता था मैं. ऐसा नहीं होता था कि मुझे कोई तकलीफ होती थी. आई वुड नॉट फील बैड अबाउट इट. आई वुड रीड इट, आई वुड बी हैप्पी, आई वुड नो मोर. तो ये बहुत सारे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आप में भी कैपेबिलिटी होगी काफ़ी लोगों में, बस उसको एक्सप्लोर करने की बात है. दैट समबडी पुशेस यू टू डू दैट. सो इफ यू कैन डू दैट, देन दैट विल क्रिएट रियल थिंकर्स. एंड रियल थिंकर्स इन देयर फील्ड आर पीपल हु कैन फिट इन एनीवेयर. मैं हमेशा बोलता हूँ, कल भी एक पर्सन को यही समझा रहा था कि जैज, रैप और पॉप करने के लिए भी क्लासिकल जानना जरूरी है. तो जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो क्लासिकल है. उसके बाद आप उसमें जैज, रैप, पॉप करते रहिए कि मैं कुछ और बात बोल दूंगा, मैं कुछ कनेक्ट कर दूंगा किसी चीज से. बट अनलेस यू डोंट नो योर क्लासिकल वेल और सारी थ्योरीज क्लियर नहीं है, तभी आप वो सब गलती करते हैं कि एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो जाएगा इन्फ्लेशन से और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, जब आपकी क्लासिकल इकोनॉमिक्स वीक है. आपने थ्योरीज जानते ही नहीं, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर, तो गड़बड़ी होती है. सो ऑलवेज बी केयरफुल दैट बेसिक्स शुड बी टॉट एंड देन लेट द पीपल एक्सप्लोर कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं विदाउट बीइंग रेजिमेंटेड. हम अपने बच्चों को लिटरेचर में इंटरेस्ट ही नहीं डलवाते. What do you know what Occidentals do? They read a book to their children as they are going off to sleep. They read a book to their children when they are interacting with them. And those books are nice books, good literature. But ये नहीं कि बच्चे को पकड़ा दिया, ये लो तुम्हारे लिए किताब खरीद के लाए, तुम पढ़ो, फिर उसको डांटा, पढ़ता ही नहीं है. इतना किताब खरीद के लाते हैं, कोई पढ़ने में इसको इंटरेस्ट नहीं है. 2, 4, 5 साल की उम्र से उनके साथ रीड करने लगी है, उनके साथ बात करने लगी है, वो देखिए वो ऐसे ही बड़े हो जाएंगे, उनको समझ आ जाएगी ये चीज़ है. हम कैसे ऑटोमेटिकली पिक्चर देखने में ट्रेंड लोग हैं. अब सोच के देखिए, कभी किसी ने सिखाया पिक्चर कैसे देखा जाता है? बचपन से सिखा दिया, ऐसे गोद में लेके टीवी दिखा रहे थे. 4-5 महीने की उम्र से सीख लिए, अच्छा स्क्रीन ऐसे देखा जाता है, कोई टेंशन नहीं, एक जगह बैठे रहो, बिल्कुल मरनासन. कुछ नहीं करना है, साथ में हो सके तो मुंह खोल लो, सब कुछ चला जाएगा अंदर. So nobody teaches us to watch a movie because we were taught since childhood as we were growing up. Because our parents were watching movie, keeping us, or watching a television, keeping us with them. So similarly, if our parents would do reading, keeping us with them, we will start reading. हमें लगा यही natural है, read करना कौन सा. तो ये समझा रहा हूँ, ये आप जब करते हैं तो थिंकर्स क्रिएट करेंगे और यूनिवर्सिटी करिकुलम को बनना पड़ेगा. जैसे सोचिए, आप अगर इंजीनियर हैं
तो आप कुछ इंजीनियरिंग करेंगे ना, तो इंजीनियरिंग करने की कैपेबिलिटी तो होनी पड़ेगी आप में। ये तो नहीं हो सकता कि आप इंजीनियर हैं लेकिन आपसे बनेगा कुछ नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा, मैं हूं तो इंजीनियर, अच्छा क्या बनाते हो बेवकूफ। ये तो नहीं चलेगा। अगर आप इंजीनियर हैं तो यू शुड नो हाउ टू इंजीनियर समथिंग। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं दैट अनलेस यू डोंट डू दैट, यू नो, एंड दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द स्टूडेंट, द प्रॉब्लम इज वी डोंट ट्रेन देम इनटू बीइंग वन। सो इफ वी कैन एक्चुअली ट्रेन देम इनटू डूइंग इट, किसी भी फील्ड में, इकोनॉमिक्स हैं तो आपको अपनी थ्योरी अप्लाई करने आनी चाहिए। सो अगर हम एक बार ये करने लग जाते हैं, देन वी बिकम इंडस्ट्रियली efficient and we become R&D wise efficient. Take it as that. Yes, yes. That is the gap. That the required skills are the missing link. Like we are skilling our people, but we are not skilling them the way we should. You know, required skill is the concern. How we do that. I mean, मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग ज़रूर होता है जब मैं देखता हूँ कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे अच्छी जगह पर भी स्लाइड से मैथ्स पढ़ा देते हैं। आप मैथ्स स्लाइड में कैसे पढ़ाएंगे? मैथ्स तो सॉल्व करके ही पढ़ाना पड़ेगा। You know, because that is a subject which you have to train the students in, that what is the theory and sort it out. स्लाइड में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जो टीचर हैं, और आज 7-8 साल से, that they will make a slide and develop it and then give it to the student. I mean, this is not the way to teach maths. Maths is about energizing your students. ऐसे चीज़ें हैं, इनका मतलब ये है और तुम ऐसे समझो इसे। तो ये जब तक हम ये चीज़ें बदलेंगे नहीं, this is about the gap we create. You know, because then the students start thinking maths is something outlandish and it has got nothing to do with the real world. But actually the maths that we study in economics or anywhere for that matter helps in creating precision in my prediction models. So our students should be trained in understanding that देखो इससे तुम precision बनाओगे prediction models करने में. But unfortunately वो होते नहीं देखता बहुत जगह पे मैं. All right, then you write the next thing up below that, fourth. Provided the teachers know how to set an open book test. I mean, an open book test does one thing good, that you don't have to learn by rote. Memory is not tested in it. All right, but then your concepts will be tested. But then the teachers have to be trained how to set an open book test so that they don't make it too tough on the concept and they rattle your brain a little bit more. अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो मानता हूँ कि एग्जामिनेशन बस एक पार्ट ऑफ करिकुलम होना चाहिए। आपका एग्जामिनेशन या आपका असेसमेंट तो हर रोज हो जाना चाहिए एक बार। साथ में एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, ये नहीं कि फर्स्ट कौन आया। एग्जामिनेशन का पर्पस ये हो जाना चाहिए कि अच्छा कौन अगली क्लास में जाने लायक नहीं है, तो उनको रोक लीजिए, उनको फिर से पढ़ा दीजिए, थोड़ा ट्रेन कर दीजिए। बाकी जो लोग अगली क्लास में जाने लायक हैं भेज दीजिए अगली क्लास में, वो अगली क्लास में देखिए उनका क्या होना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इससे मोटिवेशन खत्म हो जाएगी फर्स्ट आने की, सेकंड आने की। जैसे आप ट्रेंड होते हैं वहां से मोटिवेशन होता है। अगर आपकी ट्रेनिंग फर्स्ट आने पे ना हो, लेकिन जब आप मुंह खोलें और आपका नॉलेज झलके, उस पर मोटिवेशन हो, उस पर इज्जत मिले, तो आपको परवाह नहीं होगी मैं फर्स्ट आ रहा हूं या नहीं। आपको यह परवाह जरूर होगी कि मेरा मुंह खुले तो नॉलेज निकले। यू अंडरस्टैंड दैट? सो दिस इज what is important, that how you again create the society. So tests then will become incidental. Nobody will bother कि टेस्ट में नंबर कितने आए। बॉदरेशन ये होनी चाहिए कि तुम जानते कितना थे, और जो नहीं जानते थे वो टेस्ट के बाद जान गए। इतनी सी ही तो बात है। यू नो, that is the aspect. That of course we need to revive, no doubt. In Indian context again, north of Vindhyas again, we need to create some better university system, and we need to revive, say, universities like say Patna University or Banaras University or Allahabad University and so on, even Aligarh University. So these are universities that can do well. Some of them are doing well also, but again, you need to make sure there is competition among industries and among universities. Give teachers recognition on the basis of their research paper, and give students recognition on the basis of their work.
inter-university. So when you do that, then you create a very good conducive atmosphere. Challenge यहाँ पर यह आता है कि वो तभी होगा जब आपके यूनिवर्सिटी में वो लोग जाएं जिनको खुद पता है कि अच्छे नंबर कैसे लाए जाते हैं, कंसेप्ट अच्छे कैसे क्रिएट किए जाते हैं, न्यू थिंकिंग कैसे क्रिएट की जाती है. हमने तो ऐसा नहीं छोड़ा, हमने टीचिंग को लास्ट डिजायर्ड जॉब बना दिया. तो अगर पढ़ाने वाले वो होंगे जो कभी पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, तो ये तो बहुत, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, अगेन देयर आर सम ग्रेट प्लेसेस एंड सम ग्रेट टीचर्स हु आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज मैं ये देखने लगा हूँ इंडिया में, तो लोग खुद ही परेशान रहते हैं कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ. दिस इज अ चैलेंज, ये बदलना बहुत जरूरी है. ये मेरा 4th पॉइंट भी है एक्चुअली. डेवलप अ डेडिकेटेड कैडर ऑफ टीचर्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू राइट दैट एज 4th थिंग. डेवलप अ डेडिकेटेड कैडर ऑफ टीचर्स. Dedicated cadre of teachers, so that it is conducive to improve ability of the students, to promote modern methods of thinking. Okay, so I'm asked a question that won't 4th industrial revolution create more machines than humans? Every industrial revolution created machines and replacing humans, what humans used to do earlier, and humans found a new thing to do. Understand that. So when we had the first industrial revolution, before that the humans would do many things. That first industrial revolution changed, and so on has been happening till 4th. तो जब आप कहते हैं रोबोट्स जो हैं वो लड़ाई लड़ेंगे या रोबोट्स जो हैं वो फैक्ट्री में काम करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, ये होगा. इसीलिए ह्यूमंस जो हैं वो क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे, ह्यूमंस जो हैं वो केयर गिविंग की तरफ जाएंगे, ह्यूमंस जो हैं वो अपने जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके लिए जाएंगे, और वहाँ से वर्क सिस्टम शुरुआत होगी. आज से 200 साल पहले ऐसा एजुकेशन नहीं था जैसा आज है. क्यों नहीं था? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था. सो सिंस देयर वाज नो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यू वर बिजी डूइंग ऑल योर नॉर्मल चोर्स. आपको पानी लाने जाना पड़ता था, कपड़े सिलने पड़ते थे, तो वैसी ही ट्रेनिंग होती थी. पढ़ाई लिखाई के नाम पे रिलीजन पढ़ा देते थे कि आपने रिलीजन पढ़ लीजिए, वो आपका पढ़ना लिखना हो गया, साथ में अब आप नॉर्मल चोर्स में लग जाइए. क्लर्जी डोमिनेट करता था और रॉयल्टी डोमिनेट करती थी. बट फिर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो फैक्ट्री सिस्टम आ गया, तो वहाँ से लोग मैनेजर्स बन गए, तो सर्विस सेक्टर की शुरुआत हुई. फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया तो लाइट बल्ब्स आ गए. तो ये सारी चीज़ें तो ह्यूमंस को रिप्लेस ही कर रही थी कहीं ना कहीं. वॉशिंग मशीन रिप्लेस्ड द वॉशरमैन, टेलीविजन रिप्लेस्ड द सर्कस. अंडरस्टैंड दैट machines have always replaced humans, but humans would always find something new to do after that. But what is the challenge right now? The challenge is when the earlier industrial revolutions happened, the world was not at so much of different level of development as we see today. So Americans are entering a 4th IR, so is India maybe, but then half of India doesn't know how to use that IR, and 80% of Africa would not know that. ये चैलेंज है हमारा. ये नहीं कि ह्यूमंस को काम नहीं मिलेगा, काम तो पक्का मिल जाएगा ह्यूमंस को, लेकिन वो काम जिस तरह का होगा, वो करने लायक ह्यूमंस रहेंगे या नहीं, उतने ट्रेंड होंगे या नहीं, दैट विल बी द चैलेंज. दैट विल ह्यूमंस बी केपेबल बी टू डू दैट वर्क. दैट इज द रियल चैलेंज वी विल हैव. यस यस. Well, in current scenario, it's difficult that politics can be removed from academics. But you know what can be done? There should be a fixed number of classes for every subject, and anything lesser than that, a penalty on
on the college. That anything lesser than this number of classes. Also, there should be method of measuring your pedagogy. How much time are the teachers spending with the students? And create that atmosphere. It cannot be voluntary. It has to be a rule. Spend time with your students. Sit with them. Train them. That is what my point is, that if you have people who have chosen teaching as a profession per choice, then they won't resist their students. So do that. And again, कुछ टीचर्स को आप देखेंगे वहाँ दिक्कत आती है, या स्टूडेंट्स को भी आती है वहाँ दिक्कत, कुछ टीचर्स स्टूडेंट से ही compete करने लगते हैं. एक टफ पेपर देकर बोलेंगे, अरे मैंने तो बहुत सिंपल पेपर दिया था, तुमसे ये भी नहीं हो रहा, 2 घंटे में तुम करके दिखाओ, मैं भी एक पेपर सेट करता हूं. मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं. I had thrown this challenge to one of my friends. Incidentally, he used to teach in your college. He's a senior of mine. Yeah, he's still there. So I was at Delhi school in those days. He had set a very tough DU paper. Very tough DU paper. He was teaching macroeconomics, and he was teaching a very tough DU paper he had set. And I told him, I said, look, I set a paper and you solve it in 2 hours if it is about proving to the children who is wiser. We should not be testing you on toughness of the paper. We should be testing you on your capacity to understand the subject. So we can make some very easy questions and we can still test you on what you know and what you don't know. The purpose is not to fail you, or purpose is not to make you feel inferior. The purpose should be just to know how much have you understood. So this is where I think if teachers can be trained better, that will be a better idea. एक और दिक्कत है हमारे colleges की, universal college education in the upper middle class India. इससे छुटकारा पाने की बहुत ज़रूरत है. बहुत लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं, बेचारों को पता ही नहीं अब यहाँ पहुंच के क्या करना है. एक सब्जेक्ट ले लिया कोर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, कुछ भी कोर्स ले लिए, अब क्लास में बैठे उनको पता ही नहीं चला उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि पढ़ने के प्रति उतनी चेष्टा ही नहीं है. दे डोंट फील लाइक स्टडीइंग, बट बिठा दिया गया है उस क्लास में, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं प्रोफेसर को, बीच में किसी को अपना ऐसे कोनी मार दिया, किसी के बाल खींच दिए, अपना इस सब में लगे हुए हैं कि कुछ करके तो टाइम पास करना है. ये आदमी तो बोले चला जा रहा है, मुझे समझ में आ नहीं रही बात, तो अब करूँ क्या, तो चलो शर्ट वर्ट खींचते हैं थोड़ा. I remember one of our friends, Dr. Tendulkar was teaching, and he would teach at a very good plane, so you had to be well read to understand him. Well read means the readings only, but he would expect that you have read the readings and you have come to the class. But this fellow was a lazy chap, so he would not read it much. तो सुबह सुबह ये आए और लेक्चर थिएटर में लेक्चर चल रहा है डॉक्टर तेंदुलकर का, और ये सो गए, और सोए ही नहीं, ये जोर से खर्राटे लेने लगे सोने के बाद. So I can't tell you how embarrassing it became. And because Dr. Tendulkar, being the gentleman that he was, he said that, no, don't wake him. Let him sleep. But if you guys are getting distracted by the snores, then maybe you can tell him to take rest somewhere else. But दिक्कत ये थी कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो उस प्लेन पे नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि वो पढ़कर नहीं आए थे क्लास में. तो उनके लिए तो टॉर्चर ही हो गया डी स्कूल. फिर ऐसा नहीं था पढ़ने में खराब, ही वॉज फ्रॉम सेंट जेवियर्स कोलकाता, डिसेंट इन स्टडीज, बट पूरे 2 साल के डी स्कूल में उनके कुल मिला के 43% नंबर बने. समझ ही नहीं आता था उनको क्या बात हो रही है, क्योंकि वो अपने कॉलेज में भी वो ड्रामेटिक सोसाइटी में थे, अपना फन करते थे. डी स्कूल में क्वालिफाई कर गए क्योंकि दिमाग ठीक था, लेकिन पढ़ने की तरफ चेष्टा नहीं थी. तो गड़बड़ वहां होती है. दैट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, डोंट फॉलो एकेडमिक्स, डू समथिंग एल्स, डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग. बट एकेडमिक्स में घुस गए और एकेडमिक्स में मन ही नहीं लग रहा, हे भगवान मुझे क्यों पढ़ना पड़ रहा है. सो दिस इज समथिंग वेयर वी हैव टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन, गिव देम ऑप्शंस. इसीलिए मैं कह रहा था वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम. किसी को लगता है शू मेकिंग करना है, उनको शू मेकिंग करने दो. इंडिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, उनको जबरदस्त मैनेजरियल जॉब मिल जाएगा. किसी को लॉजिस्टिकल सपोर्ट में काम करना है, उनको वो पढ़ने दो. ये ऑप्शंस होने चाहिए. किसी को चाइल्ड साइकोलॉजी अच्छी लगती है, उनको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने दो. किसी को सिनेमेटोग्राफी अच्छी लगती है, उनको सिनेमेटोग्राफी पढ़ने दो. सबको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता है, वो वही पढ़ें, and they can discover their own passion in that. So this is something that we kind of explore for ourselves. University should be for that. Explore your future. इसीलिए यूएस में वो लोग क्या करते हैं, मैं ऐसे ही आपसे शेयर कर रहा हूँ. What they do is the first 2 years they keep it a free floating. You can go and attend any class. They don't stop you.
फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स, आई एम सॉरी, गो एंड अटेंड एनी क्लास. आप मैथ्स की क्लास में घुस जाइए, इकोनॉमिक्स की क्लास में घुस जाइए, अटेंड करते रहिए. And they won't tell you anything. The teachers will teach you, do things, and so on. And after 2 semesters, they leave it on you to decide that what will be your major. Within 2 semesters, you have gone through different classes, done different things. Now you know, okay, this is something that appeals to me. And then third semester onwards, the major begins. You want, you can switch your major also by the time you are in 5th semester, because they have 8 semesters. If by chance after 3rd and 4th semester you realize, no, this major I thought will appeal, but something else is appealing more to me. हाँ, उनके of course फिर switching exams होते हैं. If you want to switch, you have to write these exams and then you can switch. तो basic fundamentals जानने चाहिए आपको. But लोग switch करते हैं. फिर मेरे एक दोस्त PhD करने गए थे economics में, वो accounting में PhD कर लिया वहाँ जाके. He was in Ohio University. Accounting में, no, I'm sorry, Iowa State University. He did his PhD from accounting after that. उनको option दे दिया कि ठीक है आपको accounting में मन लग रहा है, आप इधर चले आइए. तो उन्होंने मास्टर्स किया accounting में, फिर PhD किया. D स्कूल के प्रोडक्ट थे वो भी. तो ये आपको कह रहा हूँ, दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी मच नीडेड इन द एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज एट द एज ऑफ 13, 14, 17, 18, 20, हाउ डू वी नो व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ? So give me all the options and then let me see what's good, and I may just pick it up. That is the basic aspect. All right. Then there's a fifth point you write. So this was fourth, education. Fifth you write, healthcare provision. Healthcare provision. And in that you put a dash and write, it involves provision for both preventive healthcare support. It involves provision for both preventive healthcare support and curative healthcare support. And curative healthcare support. That is, there should be facilities of vaccination, clean water, nutrition, sanitation, etc., to assure that disease can be prevented along with primary healthcare centers, secondary healthcare centers, hospitals and diagnostic centers to assure that in case of illness, the cure is immediate. In case of illness, the cure is immediate and stable. All right, so this is for healthcare provision that we need to do. Again, in Indian context, related to what we were doing yesterday, the examples that I had given you. So if you are writing an answer on any of these, don't forget putting the examples, the steps taken by Government of India. Now you give a heading, you write universal basic income. We do a discussion on that. ये fifth point है, inclusive education के बाद healthcare development. That is the fifth point.
Correct, Karan. Correct, Bhumika. Yes, better training in university is no doubt. No, I always emphasize on carrot and sticks. If you only give carrots, you are making your people worse off. Remember, you don't have incentive to be corrupt if you are being just watched out better. Divyanshi, I'm answering your question. Cheating is something that happens when there is a performance pressure on us. Otherwise, cheating won't happen. Remember that. Possible, Himanshu, this can happen. Okay. Now see, when we talk about universal basic income, see, this concept was introduced in Sweden and Finland, Scandinavia that is mainly, but Sweden and Finland in 2001. And in India, the 2016-17 economic survey mentioned it for the first time. So 2001 where it was introduced, and 2016-17 economic survey was something that mentioned it the first time. That let's have it. All right. Then what is the meaning? Even though economic survey said that the time has come to discuss it in India, but not to implement it. They were very categorical about saying that. But what were they saying? So, when we say universal, it means available for all. When we say basic, it means which can fulfill all minimum requirements. And when we say income, it means unconditional and periodically given that is universal basic income. Universal means everybody should get it. Basic means the basic fulfillment of minimum requirement should be there. And income means unconditional and periodically given. Unconditional means you can spend whichever way you like it. Nobody stops you. All right. इसका एक तरीका बोला जाता है, when you are given an unconditional income transfer, then you behave like an agent and not like a subject. All right. So when you are given unconditional income transfer, then you behave like an agent and not like a subject. Behaving like a subject is what? Somebody will tell you what to do, what has to be done. Behaving like an agent is you are a free person. You will choose your own domain. So that is what universal basic income proposal is about. All right. Now, you write within that benefits of UBI. Benefits of UBI. First point, you write in that it removes poverty. It removes poverty through transfer of income. It removes poverty through transfer of income. Second, it provides independence to people. I'll just highlight the first point to you, even though I expect you to understand it straight away. Suppose if my basic need is 1,000 rupees per month, poverty line, and my universal basic income transfers 1,000 rupees in my hand. You eradicate poverty by transferring income. You understand that? That is removing poverty through transfer of income. कि जो minimum basic requirement है आपने transfer कर दिया, तो poverty eradicate हो गई. All right. You write then. Could you tell me the line you wrote? Provides independence.
independence to people and empowers them as they are free to spend their income on any desired activity. On any desired activity. Okay, then you write next. It reduces exclusion error to zero. I can believe you understand it's universal. So if it's universal, then no exclusion error, nobody is excluded. Fourth, you write, it provides support against sudden income shocks. Like COVID pandemic, war, severe natural calamity, etc. Then you write next, it has the potential to increase demand by increasing consumption level. It has the potential to increase demand by increasing consumption level. And you know that can create a positive multiplier effect. That's a possibility. Then you write next, it can be provided through direct benefit transfer. It can be provided through direct benefit transfer, which means there will be lesser corruption. There will be lesser corruption and administrative cost of implementing multiple subsidy schemes will be minimized. So I'll tell you what this last line means. We are writing this last line under the assumption that universal basic income will replace all existing subsidy schemes. All right. So if I have, say, 50 different types of subsidy schemes, I combine that money and give it as UBI. Say for a second, if Government of India is paying 8 lakh crore rupees as subsidy under Fasal Bima Yojana, under say irrigation, under fertilizer, under food, and so on, and it says that, okay, you combine all that and you give it to people. All right, that is one aspect of it. But what can be the possible challenges, especially in the context of India? So you write challenges. First, it can reduce labor supply due to extra income support. Well, I'll tell you what I imply by that. You tell me this. You recall the leisure and consumption relation? Think now.
if I am giving extra income, then only income effect will work. There is going to be no substitution effect क्योंकि आप wage rate नहीं बदल रहे, आप income supply कर रहे हैं. So if I am giving extra income, only income effect will work. And what will income effect undoubtedly say? Take more consumption because you are richer, and take more leisure because you are richer. You understand that? At whichever level of income you are, आप किसी भी level of income पे हैं, just to exposition it to you, that if I take leisure and I take consumption, and suppose this is my budget line AB, you're giving me a universal basic income, you're doing something like this. That you're saying that this extra income is given to everyone. You see that? This vertical distance is everywhere same. So if earlier I was getting $100 and say you're giving a $50 extra, I have a $150 now. Now in that case, again think, wherever I am, the income effect is the only operational thing. And income effect will tell me, okay, if you are here, you'll be happier here. You understand that? So reduce your labor, take more leisure, unless leisure is not an inferior good. If leisure is an inferior good, then as your income rises, you will take less of it. But that's a very exceptional situation. My leisure will be a normal good, and if I get more income, I will choose towards more leisure. All right, अब ये क्यों ड्रॉ कर रहा था मैं, जब तुम GS पेपर 3 लिखोगे तो ये नहीं ड्रॉ करोगे, और जब तुम इको पेपर 2 लिखोगे तो ये ड्रॉ करके दिखाओगे एग्जामिनर को पेपर 2 में भी, कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, that this is what happens, that people will tend to take more of leisure and less of work. All right, that is the aspect here. You can also write income effect promotes leisure consumption. You can include, I'm answering a question, correct Ushmita, under policies to achieve inclusive growth, you can and you should include the environmentally sustainable policies. All right, that there should be environmentally sustainable policies to make growth more inclusive. So you can include that, no problem with that. Satyam, major factor is training. UBI is a freebie because it is a subsidy given to people, but given to which people decides whether it is a subsidy or not. Increasing consumption level, Karan, consumption level. Okay, let's take it further. You write the second challenge then. Yes. हाँ, उसी की जैसी चीज़ है, बिल्कुल. अगेन उसमें भी एक बात समझिएगा आप लोग, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं that if you give a basic income to people, then you make them more capable and you make them secured, which will allow them to be more efficient and therefore provide more work to the market. There is a counter thought to this thought, that they say that if you give a basic income, make people secured, you allow them to take a better work opportunity than what they are getting. But the basic theory of microeconomics kind of goes against that. Okay, then अब मैं बताता हूँ कहाँ होता भी है ये. If it's a developed economy with an individualistic mindset, like say an Occidental system, then a UBI will not deter people from working as much. So the Occidental societies and the Oriental societies are very different from each other. तो अगर एक Occidental society है, Western society है, जहाँ individualism को importance दिया जाता है, तब अगर आप किसी को UBI देते हैं, it won't affect the work process as much as has been seen in their behavioral tendencies. But in an Oriental society like us, where people are doing community living, so in that case, it's very much possible, again, it's not necessarily true, but very much possible people might be willing to live with the universal income or basic income rather than working more after that. तो क्योंकि हमारे यहाँ नहीं काम करके रहना नॉर्मली बहुत लोग करते हैं, बस उनको सस्टेनेबिलिटी का तरीका मिल जाना चाहिए.
ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को जो काफ़ी एज हो जाने के बाद भी अपने इन लॉज के पैसे पे रह रहे होते हैं। अब अगर ऐसे लोगों को आपने यूनिवर्सल इनकम ज़्यादा दे दिया तो गवर्नमेंट नई इन लॉ बन गई ना उनकी। So this is and when you go to semi-rural India, rural India, you will see many people surviving like that. That the daughter would go get the money from her parents and उनका भी घर चल रहा है उसी से। कहने के लिए अलग रह रहे हैं, लेकिन पैसे चल रहे हैं कि इन लॉज जो है वो अपना पैसा दे रहे हैं उनको कि साहब तुम्हारे हस्बैंड तो कुछ करते नहीं है, तुम भी कुछ कर नहीं पा रहे, चलो तुम ये पैसा रखो, सस्टेन करो। दिस इज द पॉइंट आई एम सेइंग। सो in such an economy, if you start giving a universal basic income, the chances that people might choose more leisure just might become higher. So that is what we have to keep in mind. Yes, yes. No, it's universal basic income. Universal. All. We will discuss that. The idea should be actually a quasi less than basic and not completely unconditional income. That is the idea in India that at best we can do. That जो गरीब लोग हैं आप उनको पैसे दे सकते हैं और वो पैसा बेसिक इनकम से कम होना चाहिए ताकि उनके इनकम अर्न करने की कैपेसिटी या इंसेंटिव बनी रहे। साथ में हमारा बजट भी उतना ही परमिट करेगा और साथ में वो फ्री व्हीलिंग नहीं होना चाहिए। That income should be rather given in terms of a voucher. You can buy milk out of it, you can buy tomato out of it, you can buy wheat out of it, and you can buy education out of it, and those vouchers can be given and vouchers can be exchanged. क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंडिया में बात करेंगे तो वो बहुत प्रीमेच्योर होगा। मैं तुम्हें एक सिंपल कंस्ट्रेंट बताता हूँ, तुम कम से कम सब, मान लो हम कहते हैं हम सब लोगों को पैसा नहीं देंगे, वी विल गिव इट ओनली टू 50% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट विल स्टिल बी 70 करोड़ पीपल। अब कम से कम कितना पैसा दोगे? 1,000 रुपया महीना तो दोगे लोगों को, तो 12,000 रुपये हो गए ये साल के, तो 8,40,000 करोड़ रुपए होते हैं। कहाँ से आएंगे? वेयर विल द मनी कम फ्रॉम? इट्स ह्यूज मनी। अगर आप कहेंगे सर फर्टिलाइजर सब्सिडी हटा देते हैं, फूड सब्सिडी, तो फिर दूसरे लोग चिल्लाएंगे, कहेंगे नहीं मुझे वही सब्सिडी दे दो, ये पैसा वैसा नहीं चाहिए मुझको। बिकॉज जब आप टोटल पैसा देंगे तो आप उनको कितना देंगे? मैं समझा रहा हूं तुम्हें। सो इवन इफ देयर इज अ फैमिली ऑफ 5 and you consider them as poor, you will end up giving them 5,000 per month. But then if you consider the money they will save in fertilizer, in food, in electricity, and so on, in seeds, that will be much more than 5,000 that we are giving today or targeting to that family. So that creates contradictions then. तो इसीलिए इंडिया में हम बातचीत कर सकते हैं, बट अभी ये बोलना कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम ले आएंगे, आई थिंक विल बी अ लिटिल प्रीमेच्योर। ओके, अभी मैं वही सी बातों पे जा ही रहा हूं। लेट मी जस्ट कंप्लीट इट एंड यू विल गेट मी। Could you repeat yourself again, please? Oriental society is us, Eastern societies. India, China, Japan, Singapore, Malaysia, we are Orientals. Occidentals are the Westerners, Europeans, Americans. So Occidental society is based on Western philosophy. Why do we live the life that we live? It's based on the philosophy with which we grow up, no? So they are based on Western philosophy, individualism, rationality, and so on. We are based on Eastern philosophies, family first, community first. You understand that? So that brings a difference in the methods. Okay? You take this up, then वो सभी चीज़ों पे लागू होता है। उनके jurisprudence हमसे अलग है, इसीलिए उनके culture हमसे अलग हो जाते हैं, because उनकी philosophies ही अलग है। आप वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़िए, आप ईस्टर्न फिलोसफी पढ़िए, यू विल सी दैट द फिलोसफीज आर ऑल डिफरेंट एंड द वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ इज डिफरेंट. So they look at life in one way, we look at it in another. The biggest difference is their philosophy is based on materialistic upliftment of the human, how the human can achieve it. Our philosophies are based on spiritualistic upliftment of the humans and how humans can achieve that. So that makes a vast difference in the way we look at life in our system. उनके यहाँ आप किसी को नहीं सुनेंगे बोलते हुए money doesn't matter. They are very unapologetic about it. हमारे यहाँ आप जिनको पैसा चाहिए वो भी बोलते रहेंगे, नहीं पैसा का तो कोई बात नहीं है उसी का बात. तो ईमानदारी से बात हो ही जाए तो बेहतर है. ये तो बेकार की बात है, पैसा का बात नहीं है, बिल्कुल बात है, उसके हिसाब से ही बात होनी चाहिए. तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं बहुत तरह के जो हम लिव करते हैं और नहीं करते हैं. ओके, देन यू टेक दिस फर्दर. Second, one point you had written, second you write, it can lead to conspicuous expenditure. It can lead to conspicuous expenditure.
CONSPICUOUS, कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस एक्सपेंडिचर मतलब दिखावे के खर्चे, हाथ में पैसे आए शुरू हो गए अपना खर्च कर रहे हैं आप। ये भी कॉमन देखेंगे, अगेन ये एक ओरिएंटल सोसाइटी की निशानी होती है। कम्युनिटी को लेके ही चलना होता है हमें, कम्युनिटी को ही दिखाना होता है कि मैं सब अराइव कर गया हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो उस चक्कर में क्या होता है, दैट आई मे बी अर्निंग एक्स। अच्छा, एक इंडिया एकमात्र ऐसे देश मिले मुझे, मतलब बिगर इकोनॉमीज में, जहाँ पे लोग अपनी करंट सेविंग्स से ज़्यादा पैसे लगा के घर खरीदते हैं। ये बिल्कुल इरैशनल बात है। अगर मेरी सेविंग आज मान लीजिए 2 लाख रुपए है, तो मैं 5 लाख का घर क्या सोच के खरीद रहा हूँ? कल मैं बस्ट हो गया फिर, या मेरे बच्चे को अचानक किसी इलाज की ज़रूरत पड़ गई तो? बिकॉज हाउस इज अ नॉन डिविजिबल इन्वेस्टमेंट। ये भी नहीं हो कि मैं एक कमरा बेच सकता हूँ। आप गोल्ड में या शेयर में तो ये कर सकते हैं, एक यूनिट बेच दिए उसका। घर में तो ये भी नहीं कहेंगे अच्छा मेरा छत ले जाओ या मेरा वॉशरूम ले जाओ, ये तो नहीं कर पाएंगे, या तो पूरा घर बिकेगा। लेकिन आप देखेंगे लोगों को कि उनके जेब में मान लीजिए एक्स अमाउंट है, घर खरीदने के वक्त, और ये समाज सिखाता है आपको, अच्छा घर खरीद रहे हो तब तो जितना पैसा है लगा दो और व्यू पर से लोन ले लो। घर तो आदमी जीवन में एक ही बार खरीदता है। दिस इज 1980s, घर जीवन में एक ही बार खरीदता है। 2022 हो सकता है 2-3 बार खरीद लो। 23, 24, 25, 26 आते आते शायद खरीदो ही नहीं, बोलो मैं अब किराए के घर में रहूंगा, इतना पैसा लगाना ही नहीं है मुझे एक फिक्स्ड एसेट में। वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी क्विक, वेरी डिफरेंटली। तो अगर तुम असेट बना भी रहे हो, अपने बाकी सारे असेट को, आई मीन यू आर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, हाउ डू यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट? But when people use all their savings to buy a house, they're putting all their eggs in one basket. You should never put more than 60%, 65% of your savings in your house and then take a loan for the rest 20% and always keep 15% of your savings free for meeting any emergency needs. This is financial, dictum. ये करना चाहिए बहुत। अगर आप बहुत ज़्यादा घर नहीं, मैं बहुत चाहता हूँ मेरा घर लैविश हो, तो आप ये बहुत से बहुत कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ लोगों की हालत ही अजीब आप देखेंगे, घर खरीद लिया बड़ा, गाड़ी खरीद ली बड़ी, फिर अचानक एक दिन बैंक करप्ट हो गए, पैसे ही नहीं थे कि अब इनके पैसे दिए जा सके। दैट्स नॉट द वे। बट व्हाई डू वी डू दैट मिस्टेक? और फिर हम कहते भी हैं ये वेस्टर्न सोसाइटी का असर आ गया। नहीं, ये हम ही लोग हैं। दे आर प्रिटी रैशनल आउट देयर, दे डोंट डू सच इन्वेस्टमेंट्स। ये हम लोग हैं, हमें सबको दिखाना होता है कि हम यहाँ, वरना आप सोच के देखिए, हम लोग अगर हम मैं क्यों बोलता हूँ हम सोसाइटी ओरिएंटेड एंड कम्युनिटी लिविंग लोग हैं। अदरवाइज सोचिए, आपने एक अच्छा रिजल्ट किया, ये आपके पेरेंट्स यही तो खुश होंगे ना। मैं अपने बच्चे के रिजल्ट पे खुश हो जाऊंगा, और अगर मुझे बताना है उन करीबी लोगों को जो खुश होंगे, तो इसी के लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं। लेकिन उसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो गली चौराहा बोलता हूँ जिसको मैं वहां पे क्यों पुट करते हैं? वो तो गली चौराहा ही है। ये मेरा बच्चा ने ऐसा किया, भाई देखिए ये प्राइज मिला, वो छुटकू सा है, उसको एक प्राइज टेडी बियर मिला हुआ है, उसको लेके खड़ा है बेचारा। आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत है, उससे वो इनकरेज होता है। बिल्कुल होता है, ईश्वर करे और इनकरेज हो, पर उस पर आप प्रेशर भी डाल रहे हैं ऑफ परफॉर्मेंस। बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई डोंट डू इट, पीपल वोंट लाइक इट। दैट इज पीपल ओरिएंटेड लाइफ। I got to have people in my life to somehow survive. Maybe again I'm a wrong person commenting. Academicians are known to be people who are not socially very active people. So maybe I'm a wrong person. But I always see it as that. कि आप people oriented रहिए, लेकिन उसमें people satisfaction, उनको देखिए जो आपको समझ पाते हैं। जो नहीं समझ पाते हैं वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। तो उस पब्लिक डोमेन में किड्स को या अपने आप को भी क्यों पुट करें, ये आपको समझा रहा हूँ। बट ये ओरिएंटल है, क्योंकि हम कम्युनिटी लिविंग में बड़े हुए। पूरा गांव जानना चाहेगा कि आपने कहाँ पे शादी की। आप समझिए ये बात, क्योंकि हम उसी तरह से बड़े होते हैं, वैसे ही ग्रो अप करते हैं। दिस इज द पॉइंट, द बेसिक पॉइंट दैट आई एम हाईलाइटिंग टू यू, दैट ये फिर आपको ज़्यादा दिक्कत देता है इन अ UBI सिनेरियो, because then people might do conspicuous consumption just to prove to others that I have also arrived. Then you take third, it will put large burden on government budget. It will put large burden on government budget and increase fiscal deficit. And increase fiscal deficit.
Then you write next. It will result in inclusion error. It will result in inclusion error. I can believe you understand that. If I'm giving money to everyone, that is an inclusion error. You understand that? Then you write next. The administrative mechanism and banking system is not entirely prepared to handle it. Remember, again, this is India-centered. You need to identify all the beneficiaries. You need to give them a banking account, and you need the banking system to be prepared that on 1st of every month, or 10th of every month, or every 3 months, a massive transfer will happen across banking deposit accounts all over India. The banking system is not yet fully prepared to handle all that. The administrative mechanism is not prepared to handle that. And then add corruption factor to it, that every 1 year, every 2 years, you will need people to be identified. You know, कि अब वो लोग अभी भी वहीं रह रहे हैं, या उनका वही account है, and so on. Again, the corruption factor comes in, that I would identify you if you pay me some money. So those factors again are trouble factors for UBI. You write next one. It is unlike transfer of food or commodities, and therefore it will reduce in real terms. It will reduce in real terms if not revised with inflation. I hope you got the points. If you are giving somebody 5 kg food, it's 5 kg food, whatever is the price of that food. But if you are giving somebody 200 rupees to buy that 5 kg food, then tomorrow if the price of that food rises, then that person will need more money. And if you are not increasing the money, then you are creating deprivation, because the value of money will get eroded by inflation. Again, आप कहेंगे ठीक है सर, तो inflation adjusted कर देंगे. Then it will arise the next question: which inflation? Whether it will be WPI, or it will be CPI rural, or CPI urban, or CPI combined. कोई बोलते हैं CPI combined कर देंगे, तो सवाल उठेगा फिर CPI rural और urban क्यों नहीं? Because you are giving money to different people in different areas. But अगर आप CPI rural और urban करेंगे, तो अलग अलग amount of money to be transferred at different places. Again question उठेगा. फिर कोई कहेंगे एक state में ज़्यादा inflation है, दूसरे में कम inflation है. Then decisions should be done accordingly. States with low inflation, people can be transferred lesser extra amount. More inflation, they can be transferred more extra amount. This will create too much of a complication when it comes to transferring it. Right now we don't realize it or we don't appreciate it because we can't think on those lines. We only think अच्छा पैसा दे देंगे लोगों को. But ये सारी चीज़ें कैसे पूरा करेंगे? कितना पैसा देंगे? आप सोचिए PM Kisan is another income transfer scheme that we give, and we have not revised it in the last 5 years. So it was 6,000 in 2019 and it is 6,000 in 2024. It should have been at least 8,000 if I make it inflation adjusted. तो वो तो नहीं हुआ 8,000, तो आज तो फिर किसान को 6,000 भी नहीं मिल रहा in real terms. So this is the challenge that we bring across. Okay, and then you write one more. It will be difficult to withdraw the scheme. It will be difficult to withdraw the scheme after introducing it once. It will be difficult to withdraw the scheme after introducing it once. You know, that is the political economy of it. ये इंडिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है. आप इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं, वो विड्रॉ नहीं होता फिर. तो ये एक चैलेंज बन जाएगा फॉर अस पर से. सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? यू राइट विद इन दैट.
primary focus of policy making, primary focus of policy making should be on provision of training, and employment generation, provision of training and employment generation for all individuals through structural reforms and skill creation. Full stop. Income support can be given temporarily. Income support can be given temporarily to people in very deprived section, to people in very deprived section, and it should be given in such a way, it should be given in such a way that opportunity cost of leaving work is significantly higher. I'll tell you what I mean by this last line. It means that if suppose you work, you will get 8,000 rupees per month, and your universal basic income or your basic income policy is giving you 1,000 rupees per month, then the opportunity cost of leaving work is too high. Nobody will leave work to get this income. All right, so that should be the long-term methodology. Of course, along with that, there should be progress or there should be development with respect to banking inclusion, give more bank accounts, and administrative training of the staff, that how to make sure that administratively the transfers can happen seamlessly. All right, that is what, even if we want to give it to few poors in India. Okay, now you give a heading, you write unemployment. Now, there is something I had talked to you on unemployment when we were doing India before 91. I'm just reminding you of that. So when we say working age group, that means people between 15 to 59. All right, that is working age group. And when we say labor force, it means people who are either working or willing to work or reporting for work. That's labor force. When we said workforce, it's only people who are working. So labor force minus workforce is involuntarily unemployed. And working age group people minus labor force was voluntarily unemployed. I hope you can recall that. So this is something that we need to keep in mind. I'll be using these terms. Also remember, when I use the word unemployment rate, it simply means workforce upon labor force into 100. That is unemployment rate. We measure unemployment in India in three ways. One is usual status. So usual status means, I'm now taking you into that. Measurement of employment in India. So one is usual status. This is if an individual was employed
on majority of working days in the previous year. That is usual status. If an individual was employed on majority of working days in the previous year, अगर पिछले साल में आप majority of working days पे employed थे तो कहा जाएगा आप usual status पे employed थे, all right? और इंडिया में जब अनएम्प्लॉयमेंट मेजर किया जाता है तो यूजुअल स्टेटस ही देखा जाता है, all right? All that data that you see of periodic labor force survey, that data is collected on the basis of usual status. So say for example there are 50 crore people in the labor force, and suppose if 3 crore people were unemployed on the usual status, then the periodic labor force survey says 6% unemployment observed in India. Do I believe we are clear on that? Similarly, the second method is what is called current weekly status. This is employment for individual in at least 3 days of the week. That's weekly status. कम से कम 3 दिन अगर कोई employed है तो उन्हें weekly status पे employed माना जाता है. All right, 6 days of course is the week 1 day holiday, and then 50% employed, you're employed on the weekly status. And the third is current daily status. This is if individual was employed the previous day. पिछले दिन employed थे या नहीं? US doesn't have a UBI, Vasundhara. No country in the world has UBI. Yes, universal means it will be for rich class also. Sukhmeen, I'm answering your question. Yes, Divyanshi, but again things become quite complicated, no? Correct, Bhumika? It was a very limited survey. In Madhya Pradesh, they surveyed 3 villages, and they told the villagers that we are giving you this money, and if you spend this money well, then we will give you more money. Then obviously they will spend it well. You understand that? So, वो survey थोड़ी काम करता है. अभी biggest exercise चल रहा है जो, we are all waiting as economists. ये 2027 में खत्म होगा. केन्या में 5,000 गांवों को चूज किया गया है, और हर जगह पे कम से कम 100 लोग पक चुने गए हैं. तो करीब 5 लाख लोगों को यूबीआई दिया जा रहा है बिना उनको बताए कि ये यूबीआई है और या इनकम ट्रांसफर है. उनको बोला जा रहा है आपको हम दे रहे हैं, आप खर्च करिए. दैट विल बी अ बेटर आइडिया हाउ पीपल बिहेव if they are given a basic income. So there have been studies like that, but those studies have been very restricted and in different domains. So you need a much more larger pilot project, and you need to understand people's behavior within that, and only economists cannot do it. You need the sociologists to play a role. You will need the psychologists to play a role in all these features. Only an economist is not fit to design this. You know, I can honestly tell you that. All right, because we are not experts on sociological behavior. Different societies behave in different manner. You know, कोई आप खुद सोचिए, हम सब इंडियन है ना कहने को, लेकिन हम में से कुछ लोग खूब लाउड हैं एज अ सोसाइटी, हम में से कुछ लोग बहुत ही सॉफ्ट हैं एज सोसाइटी. तो अब वो अलग अलग सिस्टम्स डिसाइड करेगा कि उनके बिहेवियरल पैटर्न्स क्या होंगे. सो आई थिंक वी नीड अ वेरी स्केल्ड अप methodology, and then maybe we can, and then a proper sociological understanding of it and psychological
understanding of it to maybe design a UPI. And plus, U is what I am against always. There should not be any universality in a very unequal country like India and a poor country like India, relatively poor country like India. हम अमेरिका या यूरोप थोड़ी बने हैं कि हम PPC पहुंच गए अपना या नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ पे हैं, अब कुछ कर ही नहीं सकते अपने लोगों के लिए, तो चलो इतने पैसे हैं लोगों में बांटते हैं थोड़ा सा. हम तो वहाँ नहीं हैं अभी. हम तो वहाँ पर हैं जहाँ लोगों को नौकरी दें, उनको आगे बढ़ाएं, काम दें. क्योंकि हम कुछ बातें मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बट अब चूंकि ये बात निकली है, आप सोचिए आप यूनिवर्सल इनकम दे दिए लोगों को, यू पुट इट इन देयर पॉकेट, यू आर सेटिंग देम फ्री, व्हाट डू दे डू? व्हाट आर दे लीविंग देम, यू लीविंग देम फॉर? आप काम दे नहीं रहे उनको उस तरह का कि वो काम करने आए, पैसा दे दिया आपने खाने पीने के लिए, अब कुछ तो हरकत करेंगे वो. देयर कैन बी नो वैक्यूम, वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम. कुछ ना कुछ हरकत तो होगी. आप सोच के देखिए, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट ही तो कर रहे हैं, वैक्यूम थोड़ी है वो. क्योंकि आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर रहे हैं. कुछ नहीं करने का मतलब क्या हुआ? वेस्टेज ही तो हो रहा है. तुम सो तक नहीं रहे हो, सो तो कम से कम रेस्ट हो जाएगा. कुछ नहीं, आसमान देख लो, थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया, नेचर देख रहा हूं. बट तुम ऐसे ही लिस्टलेस हो. सोशल मीडिया क्यों डेंजरस है? वो हमें लिस्टलेस करता है. उसी में कुछ अच्छा लग गया, लाइक. आप सोचिए, तो ये क्या है? लिस्टलेसनेस है. आई एम डूइंग नथिंग, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन डूइंग इट. मैं टाइम काट रहा हूं किसी तरह. या तो इतने खाली हो कि तुम्हें टाइम काटने की नौबत आ रही है, उतने तो लोग होते हैं, अगर हैं तो उनको काम दीजिए. तो ये मैं समझा रहा हूं दैट यू नो दिस इज डेंजर. उसमें तुम देखना, तुम देख लो 1 घंटा सोशल मीडिया, आधा घंटा सोशल मीडिया, कभी मूवी देख लो, आई मीन टेलीविजन देख लो, या यूट्यूब देख लो आधे घंटे. अगर तुमने उसको पर्पसफुली नहीं देखा है तो तुम और डिससेटिस्फाइड होके ही निकलोगे वहां से. कभी सोच के देखना इस बात पर कि आप आधे घंटे 1 घंटे सर्फिंग किए पर्पसफुली, या तो तुम किसी को सर्च कर रहे थे या फिर तुम कोई कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम टारगेट करके देख रहे थे, वो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. लेकिन जब तुम पर्पसलेसली देखते हो, अच्छा ये मेरा फ्रेंड क्या किया या क्या, अच्छा ऐसा आ गया नीडलेस, तो आफ्टर हाफ एन आवर यू आर मोर bamboozled than what you were before that half an hour, because you practically spent half an hour doing nothing, that you were living in a reactionary life. किसी और के फोटो देख के रिएक्ट कर रहे हो, वो थोड़ी ह्यूमन माइंड चाहता है. तो या तो कॉन्शियसली हम देखें कि अच्छा, उसी में देखना, तुम जब कॉन्शियसली फेसबुक या इंस्टाग्राम ये सब खोलोगे, तो ये मेरी असेसमेंट है, मैं गलत हो सकता हूं तुम्हें लेकर, बट तुम देखना फिर तुम 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा नहीं टिकते हो उस पर. बिकॉज यू हैव अ पिन पॉइंटेड थिंग इन योर माइंड. ये क्या कर रहे हैं, अच्छा इनका क्या लाया, इनको क्या देखे खत्म किया, आगे बढ़े लाइफ में. वो पर्पसफुल होना होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब इनकम दे रहे हैं किसी को, तो उनको पर्पसफुल बनाइए साथ में. अगर वो पर्पसलेस किए आप, तो वो वाइड हो जाएगा, और वैकम में आप जानते भी नहीं, वहीं से फिर सुसाइड्स एंड ऑल होने शुरू होते हैं. When you don't know what to do after that, you are completely listless. You have nothing to achieve, nothing to do about, nothing to wake up to. So this is what I'm saying, that develop people in that manner where they don't lose their self-worth. ये बहुत ज़रूरी है. सेल्फ वर्थ होना बहुत ज़रूरी होता है, और सेल्फ वर्थ तो मेहनत करने से ही आएगा, काम करने से ही आएगा. ये समझा रहा था. तो इसीलिए जब भी आप बोले यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल से तो खैर मेजर आपत्ति है मुझे, वाई शुड अ रिच पर्सन गेट इट. But even with basic income targeted to certain poor individuals, along with that, do make it a part of the transfer that they will be trained what to do with that money. It's very important, I repeat. अभी तुम्हें इस डायरेक्शन में एक और बात तुम्हें बोलता हूं. तुम देखोगे हमारे सोसाइटी में, I don't know, I mean you guys are adult enough to understand it. हमारे सोसाइटी में कुछ लोगों को देखोगे जो पर्पसलेस हैं at times, वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंग्जाइटी हैं. उनको कुछ काम नहीं मिल रहा, वो क्या करेंगे, तो एंग्शियस हैं. वो कभी तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएंगे, लाइफ बहुत गड़बड़ है, तुम भी बच के रहना. क्यों ऐसे परेशान है? वो खुद परेशान है बेचारे, कि कुछ नहीं कर रहे वो. तो ये आपको समझा रहा हूं दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर दैट इनकम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू गॉट टू लिव विद इट. ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूं, बट आप ओल्ड राजेंद्र नगर के आसपास रहते हैं, आप समझेंगे मेरी बात. आप यहां बहुत लोगों को देखेंगे जिनके घर से पैसे आ रहे हैं, दे आर टेकिंग देयर मनी फ्रॉम देयर होम, एंड इवन दे आर कन्विंस्ड दे विल नॉट क्वालिफाई, एंड यू विल सी देम डूइंग नथिंग. पढ़ने के नाम पे 2-3 घंटा टाइम पास हो गया थोड़ा, बाकी नहीं, वो कन्विंस्ड है उनका नहीं होने वाला है, फिर भी घर से पैसे ले रहे हैं.
फिर आप देखेंगे उनसे आप क्रिटिसिज्म मिल जाएगी आपको अच्छी, उनसे खूब सारी गॉसिप्स मिल जाएंगी आपको, आपको सारी गॉसिप दे देंगे इस पूरे एरिया की, कौन कहाँ गया, क्या गया, सही गलत सब कुछ। तो ये आप समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूं बात यहाँ पे, दैट इनकम alone doesn't make you purposeful and happy. So poors are not different from the rich when it comes to the psyche. अगर आप पुअर्स को भी बिठा के बात कर देंगे ना, खिला देंगे, बाकी बातें छोड़ दो, मैं आसानी से तुम्हें समझा सकता हूं। आपके वेकेशंस होते थे स्कूल के, कॉलेज के, तो आप पहले 2-3 दिन खूब सो सकते हैं या खूब खेल सकते हैं। आफ्टर 10 days 8 days what did the mind itch to do? Something purposeful, not necessarily study, but something purposeful. कुछ काम होना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो कुछ नहीं तो आप घर में ही किसी के पीछे लग गए, लड़ो आज ये खाना मैं बनाऊंगा, फिर वो बोल रहे हैं भागो यहाँ से, तुम्हें आता नहीं कुछ बनाना, बट वो पर्पस ह्यूमन माइंड हमेशा ढूंढता है। इफ यू विल टेक अवे दैट पर्पस, ह्यूमन माइंड कैन डू एनी डैम थिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। So that is why it is important that you transfer income if you find people are poor and you want to transfer it, but don't leave them alone. अब क्या है मेरे मन में fear, मैं आपको बताता हूँ। आप पर्पस ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, इनकम है आपकी जेब में, you are a fit case to become a pawn to somebody's larger design. आओ हम कुछ बड़ा लड़ाई लड़ते हैं, हमें सबको ऊपर उठाना है लाइफ में, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। जुड़ जाते क्यों? कॉलेज डेज में हम इतने रिएक्शनरी होते हैं, अकल ज्यादा है, पेट भरा हुआ है, चिंता है नहीं कल की। एक्सपर्ट, अब अभी तुम कॉलेज लाइफ से जैसे बाहर आते जाते हो, तुम देखोगे दैट यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन बिकॉज यू स्टार्ट गेटिंग वरीड अबाउट योर फ्यूचर। कॉलेज लाइफ स्पेशली सेकेंड ईयर मोस्ट डेंजरस। फर्स्ट ईयर में डर होता है कॉलेज का, थर्ड ईयर से थोड़ी चिंता सताती है करियर की, सेकेंड ईयर शेर होते हैं लोग, जो मर्जी करा लो, पर उसी वक्त सबसे ज्यादा खतरा है कि तुम कुछ हरकत करोगे उल्टी पुल्टी। यू नीड गाइडेंस एट एवरी स्टेप, इट्स नॉर्मल, क्योंकि आपका स्टमक फिल्ड है, आपको घर वाले लोग इज्जत दे रहे हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अभी अपनी जिम्मेदारी खुद ले नहीं रहे, वहां से गड़बड़ानी शुरू होती है। ये बात समझा रहा हूं बस, जस्ट टेलिंग यू दैट व्हाई देयर इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर अपोजिंग अ बेसिक इनकम, स्पेशली इन अ पुअर कंट्री। In a rich country, people have a different psyche, so they will do things differently. In a poor country, it's a different psyche. People do things differently. So basic income, even if you give it with some conditions attached that you have to spend here, or you will have to upgrade yourself, or maybe you will get it for 3 years and we won't give it to you after that. So if you put that kind of a thing, you can still maybe make people responsible. Otherwise, it's a very dangerous thing to do. Anyways, और सोच के देखना, अगर इनकम दे देना इतनी अच्छी बात होती तो आपके पेरेंट्स आपको फ्री में दे रहे होते, पर आपको फ्री में कुछ नहीं मिल रहा। हर समय आपके साथ एक प्रॉपर प्रेशर है कि आपको खुद को सेटल करना है। जब ये भी कहा जाता है ना हमसे, मैं अपनी भी बात करता हूं, जब मैं पढ़ता था, जब ये भी कहा जाता है कि चिंता मत करो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए वो ले लो, तो वो भी ऐड करता है प्रेशर को, जितना टाइम कितना टाइम चाहिए, मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ टाइम ले लो, लेकिन टाइम लिमिटेड ही है। ये थोड़ी कहा जाता है कि अरे कोई चिंता मत करो, तुम आराम से रहो, मैं तो कमा ही रहा हूं, तुम खाना इसी पे, कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो कभी नहीं कहा जाता। कहा जाता है निश्चिंत रहो, टाइम लो, तैयारी करो, कोई चिंता की बात नहीं है। बट वहीं से चिंता है कि नहीं, टाइम ले सकता हूं बट लिमिटेड टाइम है। सो दिस इज पेरेंट्स गिविंग यू द मैसेज प्रॉपरली दैट लुक, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन सेल्फ। तो ये समझा रहा हूं, ये सरकार भी अगर लोगों को समझा दे और फिर बेसिक इनकम ट्रांसफर करें, देयर विल नॉट बी अ चैलेंज देन। ओके, और पॉलिटिकल जो पॉपुलिज्म है वो इसमें ऐड कर दो तो और खतरनाक हो जाता है। एक बार ये रेस शुरू हो गया, इसका एंड कहाँ होगा? मैं 8,000 दूंगा, मैं 12 दूंगा, मैं 15 दूंगा, देयर इज नो एंड टू दैट रेस। सो दैट कुछ लोग कहेंगे मैं अपने जो उनको वोटर्स हैं उसकी तरफ ज्यादा मोड़ने की कोशिश करेंगे, मैं इस कैटेगरी के लोगों को ज्यादा पैसे दूंगा, ये ज्यादा गरीब हैं। इसी बेसिस पे तो रिजर्वेशन हो रहा है ना हमारे यहाँ, बातें वैसी तो होती हैं। कौन मेरे लिए वोट करेंगे? वो सडनली उस तबके में आ जाएंगे जिसको ओबीसी बना दिया जाएगा। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पॉलिटिकल पॉपुलिज्म अगर आप उसमें डाल देंगे तो यू विल रियलाइज हाउ डेंजरस concoction it becomes, and then the country implodes any day. So we should be careful about UBI, if you ask me. We can implement it only after a lot of discretion. Okay, now coming to this, एक क्वेश्चन आपसे पूछने के काफी चांसेस हैं और मैं उसी पे आपको लेके आ रहा हूं। That question is that
critically analyze the reasons of jobless growth in India. Critically analyze the reasons of jobless growth in India. Okay. Now see, when we talk about jobless growth, इसमें एक concept है मैं आपको सिखाता हूँ, then we'll go ahead. What India has been visualizing is a continuous decline in employment elasticity. So the percentage change in employment due to percentage change in GDP, we see has been declining quite consistently. So when we look at employment elasticity, this is percentage change in employment upon percentage change in GDP. And it has been declining continuously for last 22 years. It has been declining continuously for last 22 years. You write below that jobless growth takes place. Jobless growth takes place when employment increase in an economy is very low or negligible, compared to GDP growth in it. India has been experiencing jobless growth to a large extent with falling employment elasticity, in last 2 decades. Full stop. It has been observed due to following reasons. It has been observed due to following reasons. And you write 1. Overburden of population on land. Overburden of population on land combined with displacement of labor by machines.
displacement of labor by machines. I can believe we recall disguised unemployment. When my marginal product is 0 or negative, I am in disguised unemployment. All right. Could you tell me the last line you wrote? Displacement of labor resulted in higher growth without similar employment generation. Higher growth without similar employment generation. I hope you get that. That growth has been high. Agriculture on an average has grown at around 3.5% in the last 2 decades. But employment generation even in agriculture has not happened as much. So that is because of the disguised unemployment that we see and then mechanization of agriculture. And that has been one of the major troubles of India. In fact, till 1980s, even 90s, agriculture used to be a shock absorber. So if people did not get employment, they would be absorbed in agriculture. That has stopped happening in the last 2 decades, especially after 2008-9. All right. Second, then, you write, a significant part of India's GDP growth, after 1991 has been due to growth in service sector, comma, mainly IT, comma, real estate, telecom, etc., all of which create high value, without requiring large labor force. I hope you understand that. You know, we are answering 2 sides of the story here. We are not answering only why unemployment has been there in India. We are answering why there is lack of employment in spite of growth. Understand that part of the question. So we are not only answering why there is lack of employment. We are answering there is lack of employment in spite of growth. So GDP is rising, but employment is not. So what's the factor behind that? So that is what you have to keep in mind when you are applying yourself in such questions. Third, then you write, lack of growth of medium scale industrialization has resulted in industrial growth mainly through large scale industries, which are capital intensive. So remember, if we invest more in industries which are 100 crore rupees industry, 150 crore, hiring 200 workers, 100 workers, that can be employment generating. But that can happen in factories. Factories producing clothes, factories producing furniture, factories producing toys. That is a missing thing in India. We don't have too many of such factories. So even if we produce these things, we are mainly producing them in the small scale industries, not the medium one, or in the very large scale industry. And that is the dichotomy we have, creating less growth. But the production again is high because of large scale industrialization playing a role. Then you write next,
growth due to banking, automobile, growth due to banking, automobile, pharmaceutical, etc., is dominated by skilled workers, with high productivity, Therefore, high growth has taken place. Not because too many people are employed, but because those who are employed have been very productive. Those who are employed have been very productive. You understand that? It's the high skilled work which is getting India a lot of money, say by banking, stock market, higher education, healthcare. These are all sectors where a lot of money, pharmaceutical, automobile, among industries, steel industry. So you don't hire too many people, but you are producing a lot of output, growth without employment, again. And then you write one more. Lack of labor law reforms combined with cheaper interest rate has incentivized the firms to produce using more machines and less workers. All right, so the problem is the rigidity of labor laws in India. Rigidity means once you have hired, you can't remove, you can't have contractual labor, you can't have fixed time workers. So if these rigidities, and we have already passed the labor codes which can replace it, but unless we don't remove these rigidities, difficult to overcome the challenge. You write below that, policy steps to promote employment in India. Policy steps to promote employment in India. You write first, promoting integrated farming, which increases farm productivity, and removes both disguised and seasonal unemployment. सेकेंड, एक बात समझना आप, मैं जो पहले 3-4 पॉइंट आपको दूंगा, 3 पॉइंट रादर, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू रिमूविंग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट
And the next 3-4 points will be directly related to removing urban unemployment. So you train yourself like that, that agar exam mein by chance question aa jata hai rural unemployment, urban unemployment, then the points can be categorically picked up from there. Second, you write increasing investment in agriculture, increasing investment in agriculture to increase profitability, to increase profitability, comma, promote multiple cropping, and develop strong supply chain. I can believe you are understanding these terms now. As we have covered agriculture, I'm assuming these terms are understood. And develop strong supply chain, all of which will contribute to employment generation. Then you write next, promoting rural infrastructure, promoting rural infrastructure to encourage rural industrialization, rural industrialization in MSME sectors, like textile, food processing, leather goods, etc. They will create more employment. They will create more employment and reduce pressure of population, on land. Then the fourth point that you are writing can be common to both urban and rural unemployment. So you write fourth, promoting skill development, and training on a large scale to assure that workers can be upgraded to high productivity employment. Then you write fifth. Now, fifth, sixth, and seventh that you write are mostly urban-led employment. So fourth is common, 1 to 3 rural, and 5, 6, 7 urban. So you write labor law reforms. Labor law reforms should be implemented to encourage more hiring. You know, interestingly, India's labor laws are more stringent than even Chinese and Vietnam's labor law. And Chinese are still calling themselves a communist country, and Vietnamese would call themselves a communist country till very late. So somehow we are still stuck up in a time warp. हमारे लेबर लॉ आज भी 1970, 80, 60, 50 वाले हैं. बाकी कंट्रीज आगे बढ़ गई, उन्होंने चेंज कर लिया. एंड नाउ दे आर बीटिंग अस ब्लैक एंड ब्लू व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ द लेबर लॉ रिफॉर्म्स दैट दे हैव बीन एबल टू डू.
ऑल राइट, आप जो मैंने आपको वीडियो अपलोड किया, मैंने आज पुट किया है ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, यू गो थ्रू दैट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेबर लॉ रिफॉर्म एंड what all do we need to do. I will give you a small talk on that around 10-15 minutes, but I need you to go through that to understand what is implied by it. In the same thing, or 2x की speed पे नहीं. Okay, you in the same thing you write labor law reforms. It will also promote. It will also promote training of the workers. Then you write, sixth one, promoting labor-intensive services. Promoting labor-intensive services like tourism, transportation, and restaurants and hotels, to develop higher employment opportunities, in service sector. All right, that's another factor that when you talk about tourism, tourism is one place, or even hotels, restaurants, or for that matter, things like transportation. They give employment to people on the lower end, say people who are workers, daily wage laborers, porters. They give employment to people in the medium scale, semi-skilled, cooks, drivers, etc., and give employment to people who are upscale, tour managers, financial intermediaries, and so on. So that is where tourism, transportation, hotels, restaurants, big employment generators. And then you write one more. Promotion of entrepreneurship development. Promotion of entrepreneurship development by scaling up programs like Startup India, and Stand Up India, to assure higher level of employment generation through private initiatives. And always conclude such answers by insisting on the requirement to invest on human capital. All right, always conclude them with that there has to be an insistence on investment in human capital. All right, we'll keep it till here today. Tomorrow you don't, yes. We have around 0.07 at the moment. So you won't have a class with me tomorrow. Tomorrow is Sunday. All right, so we will be meeting next on Monday. Monday I might be a little delayed to your class. I think I'll be leaving only around 3:15. I'll let you know. So Monday morning एक बार Telegram देख लेना ज़रूर कि मैं कितने बजे तक क्लास में आ रहा हूँ. I'll see you then. Thanks a lot. Divyanshi, the problem is that the major employment can be created in sectors like textile, toys and all, which we are ignoring. Okay, people online, I see you on Monday at 3 o'clock, 3:15 odd kind of. Thank you.